Mehwish بتائیے گا when we are ready to go. Start. Thank you, Mehwish. Assalamu alaikum everyone. On behalf of Pakistan Alliance for Early Childhood, I welcome you all to our online certificate completion ceremony. ہمارے لیے یہ آج ایک بہت ہی پراؤڈ مومنٹ ہے، دوہری خوشی کا موقع ہے. ایک تو ہمارا انڈیپینڈنس ڈے ہے، ہماری آزادی کا دن ہے، اور اس دن نہ صرف یہ کہ ہم اپنے ملک کی آزادی شیئر کر رہے ہیں، بلکہ جو ایجوکیشن کا ایک نیریٹو ہم لے کے چل رہے ہیں کہ قوموں کی جو تعمیر کرنی ہے، اس کی جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ہے، اور ہم اپنے استادوں کو اس کے لیے امپاور کرنا چاہتے ہیں، اس کا جو سفر ہم نے شروع کیا وہ آپ سے شیئر کریں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ بدلاؤ دیکھیں تو اس بدلاؤ کا آغاز جو اپنی فیوچر جنریشن ہے اس کو بلڈ کرنے سے ہوتا ہے. ارلی چائلڈہڈ کا نیریٹو، ارلی چائلڈہڈ کی جو ایجوکیشن ہے یا اس کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے، اس کے اوپر بہت کام ہے. پیفک کا یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو بہت ذمہ داری کے ساتھ پاکستان میں بہت سالوں سے کام کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ خود کام کر رہے ہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کو جو ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے بچوں کی تعمیر کرنی ہے، ان کی کردار سازی کرنی ہے، اور ان کو ایک خوش اور ہیپی ہیومن بینگ بنانا ہے تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے. اور پھر ویسے ہی استاد بھی بنانے ہیں، ویسا ہی انوائرمنٹ بھی دینا ہے. تو ان سب ٹیئرز کے اوپر مل کے جو کام ہو رہا ہے اسی کی ایک ہماری کاوش تھی کہ ہم نے ایک آن لائن پروگرام ڈیزائن کیا، اس کو امپلیمنٹ کیا. آج اسی کی جو جرنی ہے وہ خدیجہ شیئر کریں گی، ساتھ ہمارے بہت وردی گیسٹ ہیں جو ڈفرینٹ ایریاز میں کام کر رہے ہیں. ایک بہت زبردست پینل ڈسکشن میں اور جو اسپیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو قائد اعظم کا خواب تھا کہ وہ کہتے ہیں نا یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، وہ جو 3 باتیں ہمیں سکھا گئے، اب ان کو ہم نے بحیثیت قوم کیسے آگے لے کے چلنا ہے، کیسے قوم کی تعمیر کرنی ہے. تو اس پہ بہت بات ہوگی. اپنے پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ قاری رخسار احمد صاحب ہیں، ان کی تلاوت کلام پاک سے. تو قاری رخسار صاحب آپ سے میں درخواست کروں گی کہ آپ باقاعدہ آغاز کریں. آپ سب لوگوں کے جوائن کرنے کا بہت شکریہ. جی السلام علیکم میم، آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين
صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. Aruj, your mic's muted. Jazakallah Qari Saab, thank you so much for the beautiful recitation. I would request Mehwish to play the national anthem so that we can proceed to the program. Kindly rise in honor of the national anthem. Mehwish, would we play the national anthem? Thank you so much, Mehwish. Next, we have our panel discussion. Sir Shehzad Mithani is here, mashallah, education policy advisor. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, بہت عرصے سے پیفک کے ساتھ کام کر رہے ہیں, بہت خدمات ہیں ان کی پاکستان کے لیے. اور جو وردی پینل ہے, میں ریکویسٹ کروں گی سر شہزاد سے کہ آفٹر انٹروڈیوسنگ ہمسیلف وہ پورے پینل کو انٹروڈیوس کریں and then he lets us know what the panel discussion is about. Over to you, Sir Shehzad. Thank you. Assalamu alaikum and Jashn Azadi Mubarak ہم سب کو. آج کا جو پینل ڈسکشن ہے بیسیکلی ہم ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے نیشن کے اسٹرانگر فاؤنڈیشنز پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ محمد رفیق طاہر صاحب ہیں جو فارمر جوائنٹ ایجوکیشن ایڈوائزر رہے ہیں فیڈرل منسٹری کے ساتھ ایجوکیشن پروفیشنل ٹریننگ ICT. ہمارے ساتھ عائشہ عادل ہیں جو نگراں کیئر کی فاؤنڈنگ ممبر ہیں اور ارلی چائلڈہڈ کی ایکسپرٹ ہیں. مس کلثوم ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں ٹیچر فورم ICT کے, اور ڈاکٹر سلمہ نظر ہیں جو ایجوکیشن کنسلٹنٹ ہیں اور پالیسی انالسٹ ہیں. تو یہ میں اگلے 5-7 منٹ میں فردر میں ریکویسٹ کروں گا تمام پینل ممبر سے کہ وہ اپنا تعارف کروائیں, اور اس کے بعد پھر ہم جو سیٹ سوالات ہیں اس پر ہم بات کریں گے. تو رفیق صاحب آپ تھوڑا سا تعارف کروا دیں اور پھر ہم دوسرے پینل ممبرس کے پاس جاتے ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم. جی تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے میری آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. میں اگر میری آواز آ رہی ہے تو میں تھوڑا سا آواز کو پہلے ٹھیک کر لوں. جی سر, آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے. اچھا چلے, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. میں تھوڑا سا آپ کو لیٹ جوائن کر رہا ہوں کیونکہ آپ میں سے سب لوگوں کو تھوڑا علم ہوگا کہ لاسٹ ویک میری بڑی بہن کی ڈیتھ ہوگی اور اس وجہ سے ہم سارے کافی ایک غم میں ہیں. ابھی جب میٹنگ شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے میرے بہت سے لوگ وہ تعزیت کے لیے کنڈولنس کے لیے آ گئے, تو اس وجہ سے مجھے تھوڑا آپ سے فوری جوائن نہیں کر سکا اور ابھی میں ان کو چھوڑ کے آپ کو میں جوائن کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو یوم آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں, اور یہ میں مبارکباد دیتا ہوں خفیجہ ان کی ٹائم اور ان کی ٹیم اور ساتھ ڈاکٹر مٹانی کو کہ انہوں نے آج 14 اگست کے موقع پہ ایک بہت عام ایشو پہ گفتگو کا وہ ایک ویبینار انہوں نے ارینج کیا ہے. میرا نام محمد رفیق طاہر ہے جیسے آپ سے بتایا گیا ہے, اور میں نے اپنی زندگی کے تقریباً 34 ایئرز
منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن میں گزارے ہیں. پوری تقریباً ساری سروس فیڈرل ایجوکیشن میں رہی, منسٹری آف ایجوکیشن میں رہی, اور میں نے ایک لمبا وقت جو ہے وہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی ایک نیشنل کوآرڈینیٹر کے طور پہ پورے ملک کے لیے 4 صوبوں اور تمام علاقوں کے لیے میں نے کام کیا وزارت میں رہ کے. اور اسی طریقے سے جو یہ جو ہے الائن ہے, اس کے ساتھ بھی میرا ڈے 1 سے میرا ایک ریلیشن شپ ہے, میرا ایک تعلق ہے, اور اس کو قائم کرنے والوں میں بنیادی طور پہ رہا ہوں. اور ارلی چائلڈہڈ میں جتنا بھی ڈیولپمنٹ یا ایجوکیشن میں جو کام ہوا ہے پبلک سیکٹر میں, اس کا میں پلاننگ فیز کا بھی حصہ تھا, امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن میں میں نے اس میں ایک رول پلے کیا. انٹرنیشنلی بھی بہت ساری کانفرنسز اور سیمینار اٹینڈ کیے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اگر پاکستان کی تعلیم میں سب سے اہم ترین کوئی چیز اس وقت ہے تو وہ ECD ہے. اس کی بہت بڑی بنیاد ہے, اس پہ ہم کام کریں. پبلک سیکٹر میں ہم کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہمارا بھی ایک بہت بڑا نیٹ ورک بن گیا ہے. تو میرا خیال میں اس حد تک کافی ہے, باقی چیزیں پھر ساتھ آپ سے شیئر کریں گے. Thank you, sir. Thank you so much. Shehzad, I would just request you for a quick prayer. Sir کی جو بہن ہے جن کی وفات ہوئی, اس کے لیے اگر ہم فاتحہ پڑھ لیں تو then we can move on. Sure. Let's take a moment. فاتحہ پڑھ لیں اور پھر then we بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آمین. سر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جبار رحمت میں جگہ دے اور ان کا اگلا جہان بہتر کرے. Over to you, Sir Shehzad Mithani. Thank you, sir. Ma'am Kulsum Sahaba, can you please share your introduction with us, please? جی میں کلثوم ہوں, اور میں نے ایئر 1986 میں ٹیچنگ کو ایز اے کریئر جوائن کیا تھا جب میری ماسٹرز ہوئی تھی چائلڈ ڈیولپمنٹ میں, اور میں نے OPF سے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا. آفٹر 3 years آف مائی ٹیچنگ ان OPF, میں ٹیچنگ میں ہی 33 years سے ہوں. 2019 میں I took my retirement as head of the department Child Development and Psychology of College of Home Economics, Islam Abad. ابھی ریسنٹلی میں اسلام آباد میں کیپٹل ٹیریٹری کی پریزیڈنٹ ہوں پاکستان ٹیچرز فورم کی. وی آر ورکنگ فار دی ویلفیئر اینڈ فار دی ٹریننگز آف دی ٹیچرز ان پاکستان. اس کے علاوہ میں I'm founder of Child Development Center. We give summer and winter camps to preschool children. Recently, I have done my single national curriculum training for Pre-1. College of Home Economics is the only college in Islamabad and peripheries besides Lahore, جہاں پہ میں نے اپنے زندگی کے 20 years content writing, development of scheme of studies and programs for قائد اعظم یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی and فیڈرل بورڈ کرتے رہے ہم لوگ. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے اپنا ڈپارٹمنٹ آف چائلڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ F11 میں کالج شفٹ ہو گیا, تو اس کے ساتھ کافی ساری اچھی ٹریننگز کے ساتھ ہم نے شفٹ کیا ہے. I've been working in this field of child development for the last 27 years. تو جی ہم تو اکیڈیمک میں رہے ہیں, ایڈمنسٹریشن میں بھی میں رہی ہوئی ہوں, اور میں ٹریننگز بھی کراتی رہی ہوں. تو اب I'm really indebted to all these programs of single national curriculum جو کنٹری میں دیا ہے. Inshallah we will be working towards implementation also, اور ہم لوگوں کو اپنے موسٹ آف دی ٹائم ہے اس کام پہ اسپینڈ کرنا ہے پاکستان ٹیچر فورم کو, کہ ہم اس کی امپلیمنٹیشن میں جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں ہم کریں گے انشاءاللہ. عائشہ عادل صاحبہ, can you please introduce yourself? جی تھینک یو شہزاد صاحب. السلام علیکم, میرا نام عائشہ عادل ہے. بائی ٹریننگ آئی ایم اے سوشل ڈیولپمنٹ پروفیشنل, and I've worked in the development sector on various projects, but mainly centered around women's empowerment and women's sort of economic uplift. میرا بیچلرز بھی ڈیولپمنٹ میں ہے, اور میرا ماسٹرز لندن اسکول آف اکنامکس سے ہے, سوشل پالیسی اینڈ پلاننگ میں. So I worked in the development sector for about over a decade and a half before I became quite disillusioned with it.
And उसी period में हमने एक effort किया to set up a platform by the name of Nigran, which started off as being a childcare facility for working families. क्योंकि इस्लामाबाद में particularly एक dynamic है कि वो extended family structures उस तरह कम हैं. There's a lot of professionals that move in from other places around the country. तो जो infants हैं, young children, and even after school care के लिए options हैं, but कम थी, and we felt कि we could maybe do something our way. So we've been doing this for 7 years. Shahzad साहब ने मुझे introduce करते हुए बोला expert. I am no way an expert, and आप लोगों का experience collectively and individually, is very inspiring. We're fairly, we're very curious, to be honest, because we work with young children. और वो हमारे पर responsibility है इन बहुत छोटे बच्चों की. So what really happened over these 7 years is that we went from being concerned with the mother to being really sort of focused on the child. And that's been a little bit of a journey for ourselves. So it's a partnership-based organization in terms of the families that come to us. They're not clients. We partner in the care and upbringing of the child. So yeah, that's what we're doing, and that's what we hope to continue doing. We've just run a little experiment. Khadija has been super helpful with that. When the government announced the SNC, हमारे लिए बड़ा we were very excited to see कि early years वाले उसमें क्या है, and खैर हमने खोला and we loved it. So we've just run a very small experiment over the summer to enable the enablers of children, which is the teachers that work with young children. Unfortunately, even sitting in Islamabad, there's such a dearth of good teaching. जो centers claim कर भी रहे हैं कि हम play based हैं या child led हैं, or whatever, inquiry based, and all of this fancy lingo. Like when you scratch it beneath the surface, unfortunately वो वही है, dumping of education. It's a very didactic sort of an approach to young children. So we did an experiment, and I feel like there's a lot of hope using this curricula in particular to change how young children are dealt with in this country. So happy to be here. Thank you so much. And आप अपने right में expert जरूर हैं. Listening to you, Dr. Salma. Thank you, Perfect, for giving me this opportunity to be part of this panel, because I'm one of the participants as well. So I'm waiting for my certificate eagerly as well. I've earned my PhD from the University of Massachusetts in Policy Research and Administration. And after that, while there in the US, I started working in the development sector. And mainly I worked on the policy issues and gender aspects for some of the projects for Nigeria, Jordan, and then I got a chance to work in Afghanistan on several positions. I would say not positions, but on different assignments. And then I joined Fatima Jinnah Women University as an assistant professor, where I met this wonderful team, where we started a program, working on a program for early child care and education. I was the in charge for early child care at Fatima Jinnah Women University for over 3 years. And I think that was the time when I started learning more about how kids are, they're amazingly beautiful creatures. We cannot just tell they are kids and they will be kids. They have put me in so many questions, and I started questioning my own teaching and my own methodologies, working with those small children. Right now, I work as an independent consultant, and mostly I spend my work in writing things. And I'm reading a lot these days, which I've missed a lot in the past few years, I must say. And one of the things about this course, because I know I'm not here right now to express my opinion about the course, but I must say that this course have given me an opportunity to look into child development and child education from a very different perspective. As a policy analyst, I would, because I got a chance to work with the Higher Education Commission for a long time, both on policy and on teacher development modules, and then as a resource person. And I always thought that it is more important that we shall focus on such issues. But now, after receiving this course,
I think I'm both excited and confused because there is so much, you know, I don't know, this course makes the children like, for me to more, I think we have to spend more time to know more about them. There is so much more than on the surface that we see as parents, as teachers, and as individual of the society. So yeah, I hope. Great. Thank you, Dr. Salma. Just brief what I'm involved in currently. I'm working with an international organization, which is based out of Canada on early learning development, early childhood development, or we are looking at executive functions and brain development. So how does the theory work? And we have a research program along with the operations to see in infants, in preschoolers, in kindergarten, कि उनके brain किस तरह develop होते हैं और क्या इन executive functions क्या हैं जो बच्चों when they turn adults, how those inhibitory functions, working knowledge and cognitive dexterity, flexibility allows them to become a better human being, better insan, in short. So yes, it's diverse. I agree with Dr. Salma. It's very diverse, it's experimental, it's education, it's development. And we are in the business of national development or in developing global citizens. So, or jo bhi hum hai aaj, by the age of 6-7 years, we are who we are right now. So it is so fundamental that we lay the foundations properly. और जो भी research हम कर सकते हैं, जो भी practices हम evolve कर सकते हैं, उसको हम आगे बढ़ाएं और national agenda पे लाएं. Without further ado, for each of the panel members मैंने सवालात भिजवाए थे. पहला सवाल in general context आपके अपने तजुर्बात की पेश नज़र कि early years development, prenatal to 6 years, क्यों critical है? Why is it so fundamental, so important? Rafiq साहब, आपसे शुरू करते हैं. Sir, a few minutes to you and then we'll go to all the panel members. Thank you, Dr. Sir. ये बड़ा pertinent question है और खासकर जब हम पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करते हैं तो it is very unfortunate कि हम जितनी इस पे हमने देखा, जितना हमने इस पे पढ़ा और जितना हमने दुनिया में इसकी बेस पे जो दुनिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वो अर्ली ईयर्स की बेस पे की और उसके मुकाबले में बिल्कुल उसके उल्ट पाकिस्तान में कि हमने सरकार में भी एक ऐसी चीज़ रख ली कि हम तो 5 साल से या 6 साल से पहले बच्चे को इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं रहे. और हम इवन अगर आप इसको भी देखें तो हमारा जो प्राइमरी है वो ग्रेड 1 से स्टार्ट होता है और उससे पहले लीगल कोई हमारे पास फ्रेमवर्क भी नहीं है कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए कि हम अपने बच्चों को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, उनकी सारी डायमेंशन जितनी डोमेन्स हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो हम उनको देंगे. वो कहीं भी नहीं है, उसका लीगल कवर अब भी नहीं है. हेयर एंड देयर पूरे मुल्क में बहुत काम हो रहा है. मेरी अपनी ज़ाती राय ये है, एजुकेशन सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में 34 साल वजारत तालीम में गुजारने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अब इसके बगैर पाकिस्तान की तमाम तालीमी सेक्टर की तरक्की शायद किसी तरह से भी मुमकिन नहीं होगी कि जब तक हम अर्ली ईयर्स को अपना प्राइम फोकस नहीं बनाएंगे. मुझे खुशी है कि अब हुकूमत इस तरह से सोच रही है कि हमने एक लेजिस्लेशन पे अब काम होना शुरू हो गया है. आई होप सो कि अगर वो लेजिस्लेशन हो जाती है कि वही अर्ली ग्रेड में यानी प्री 1 एक ऐसा साल है या ये 2 साल है, डिबेट 2 और 1 साल पे हो रही है कि उसको भी हम अपनी प्राइमरी एजुकेशन का हिस्सा बना दें तो शायद फिर ये एक आपके पास एक लीगल फ्रेमवर्क भी हासिल हो जाएगा जो कि फिर तालीम हर जगह पे हर बच्चे को, इस उम्र के बच्चे को मैंडेटरी देना हमारे लिए लाजमी होगा. दूसरी हमारी जो तवज्जो इस इम्पोर्टेंस को सामने रखते हुए या इसकी अहमियत को सामने रखते हुए हमने दी वो क्योंकि आपको अंदाज़ा है डॉक्टर साहब कि मैं पाकिस्तान का जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उसका मैं ऑथर हूँ. उसकी बुनियाद मैंने रखी है पाकिस्तान में और उसको अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने डेवलप करके उस स्टेज पे लेके आ गए हूँ कि 16 तारीख को 16 अगस्त को इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इस पूरे प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं और इस प्रोग्राम के अंदर अर्ली ग्रेड के जो करिकुलम है वो भी लॉन्चिंग सेरेमनी का हिस्सा है. तो दैट इज अगेन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री अब उसके सामने
کیونکہ وہاں پہلی اسپیچ مجھے کرنی ہے، تو میں اس موضوع پہ انشاءاللہ یہ بات بھی کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ ہم نے یہ پری-1 کا جو کریکولم بنایا ہے اس میں ہمارے ذہن میں کون کون سی امپورٹنٹ چیزیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب توجہ ہماری بدلی ہے، ہمارے جو حکومتی پالیسی لیول کے ہم جو لوگ بیٹھے تھے ان کی سوچ بدلی ہے. اب ہم نے کریکولم پہ یہاں کام کیا، یہ ختیجہ اور ہماری پوری ٹیم اس کا حصہ میں نے ان سب کو بنایا جس میں عروج بھی شامل تھی. اب اس کے بعد ہمارا دوسرا ایشو یہ تھا کہ چلیں کوئی اس پہ کچھ بکس بھی بنے، کوئی مٹیریل ڈیولپ ہو. تو اس اہمیت کو ہم نے اور اجاگر کیا، اس مٹیریل کو ہم نے بہت کمپریہنسively ڈیولپ کیا جو اب پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھانا مینڈیٹری ہوگا اس حد تک. تو وہ اور پھر اس سے ہم نے دیکھا کہ کریکولم یا ٹیکسٹ بکس مٹیریل ڈیولپ ہونا ہی کافی نہیں ہے، اصل تو پیوٹ ہے ٹیچر، ہاؤ ٹو ٹرین دا ٹیچر. اور مجھے خوشی ہے کہ میں بینگ دا ہیڈ آف دا نیشنل کریکولم کونسل، ہم نے آغا خان کے ساتھ، آغا خان یونیورسٹی کے ساتھ مل کے ہماری پوری ٹیم نے ٹیچر ٹریننگ ماڈول بھی ڈیولپ کر دی ہیں. اور ایک کلثوم ابھی بات کر رہی تھی، مجھے یقین ہے کہ انہوں نے ابھی اس پہ سنگل نیشنل کریکولم کی امپلیمنٹیشن میں وہ ٹیچر ٹریننگ ماڈول، یعنی ٹیچر اگر ہمارا ریڈی ہوگا، تیار ہوگا، اس کی کیپیسٹی بلڈ ہوگی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ارلی گریڈ کی جو ایجوکیشن یا ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہم لیٹر اینڈ اسپرٹ آن گراؤنڈ نافذ کر سکتے ہیں. اور سب سے جو کرٹیکل سوال ہمارے لیے تھا اور ہے اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے، وہ یہ تھا کہ ہاؤ ٹو اسیس دا پیپل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے پاس ارلی گریڈ کے لیے ایک اسیسمنٹ فریم ورک بھی تیار ہو گیا ہے جو کہ آغا خان، فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن، نیشنل کریکولم کونسل اور باقی تمام صوبوں کے اسٹیک ہولڈر نے مل کے بنایا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک چوتھی چیز ہے، ایک پیکیج کی سیاست تک ارلی گریڈ لرننگ کے لیے یا ارلی گریڈز کے لیے وہ پاکستان میں کریکولم، ٹیکسٹ بکس، لرننگ مٹیریل جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اور ٹیچر ٹریننگ، اور پلس یہ ہے کہ اسیسمنٹ فریم ورک یہ بن چکا ہے. تو دیٹ کوڈ بی دیٹ ساؤنڈز کہ حکومت نے ریئلائز کیا ہے کہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور اگر اس اہمیت کو آگے پروموٹ ہم نے نہ کیا، اور آپ کو دیکھیں، آپ نے پرائم منسٹر ہمارے اپنی ہر گفتگو میں ارلی گریڈ پہ اور سٹنٹنگ پہ بات کرتے ہیں. ہمارا بچہ تو 5-6 سال ان ساری چیزوں سے محروم ہوتا ہے جو کہ آپ کو اندازہ ہے کہ جو آپ کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے 80%، 85%، وہ پہلے 6-7 ایئرز میں مکمل ہو جاتی ہے، اور اس وقت میں پاکستان کا جو بچہ ہے وہ ان اٹینڈڈ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت کو ریئلائز حکومتی سطح پہ بھی کر لیا ہے، پالیسی میکر نے بھی کر لیا ہے، اور باقی اسٹیک ہولڈر بھی اس پہ. اور یہ جو الائنس ہے یہ اس کی ایک اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم پاکستان میں وجود میں آ گیا ہے. اور اسی الائنس کے تحت جو 3 کانفرنسز، 2 نیشنل اور 1 انٹرنیشنل ہو چکی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سمت کا تعین ہو چکا ہے، اس کی اہمیت کو ہم نے ریئلائز کر لیا ہے. اور اس پہ یہ جو پہلا فارمل پیکیج، مینڈیٹری پیکیج سنگل نیشنل کریکولم کا، جس میں کریکولم کے ساتھ مٹیریل، ٹیکسٹ بکس مٹیریل، لرننگ مٹیریل کے ساتھ ساتھ ٹیچر ٹریننگ اور اسسمنٹ پہ کام ہوا ہے. تو دیٹ از اے فنڈامنٹل ریئلائزیشن. اور یہ ان فنڈامنٹلس کو ہم نے سمجھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو ہم نے اب اڈاپٹ کر لیا ہے. آئی ہوپ سو کہ پرائم منسٹر کی اس لانچنگ سیریمنی کے بعد انشاءاللہ we will be able to move forward اور اس سے اگلے سٹیپس کریں گے. اور میں تو دنیا کے جن ممالک میں گیا ہوں اور جتنی میری ارلی گریڈ ٹیچنگ میں میری سٹڈیز ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ایک صرف میں، کیونکہ میرا تعلق اکنامکس سے بھی ہے، میں ایک چیز کہتا ہوں، اگر کسی ملک میں اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہے اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ کا، تو آپ اس کے ایک پیرامیٹر کو، ایک ویریبل کو دیکھ لیں کہ وہ کنٹری جہاں ارلی گریڈ کی ایجوکیشن کو پرائم امپورٹنس دی ہے، ان کا اکنامک ڈیولپمنٹ ریٹ یا اکنامک گروتھ وہ کتنی ہوئی ہے. اور وہ کنٹری جو اس چیز کی جنہوں نے نظر انداز کیا یا نیگلیکٹ کیا ہے، ان کی اکنامک گروتھ اور ان کا اکنامک ڈیولپمنٹ ریٹ وہ کیا ہے، وہ ایک واضح فرق آپ کو نظر آئے گا. تو میرا اپنا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جس طرح آج آپ نے بھی اس چیز کا انتظام کیا، یہ بھی اس بات کی ایک انڈیکیشن ہے کہ ہمیں ابھی اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہو گیا ہے، اور اس کو بیسک پرائرٹی بنائے بغیر اب شاید ایجوکیشن سیکٹر اور جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے خواب اور وہ جو چائلڈ کی ایکچولی
ان ساری ڈومین جو اس کی ہیں اس کی ڈیولپمنٹ شاید پاسبل نہیں ہوگی, اور اس بچے کا آگے جو کنٹریبیوشن یا رول ہوگا شاید اگر ارلی گریڈز کی تعلیم نہیں ہے تو وہ شاید وہ رول اتنا افیکٹو نہیں ہوگا بجائے اس بچے کے جس نے ارلی گریڈ کی ایجوکیشن سے اپنے آپ کو گزارا ہے. تو اٹس اے ویری امپورٹنٹ ریئلائزیشن ہے, اور انشاءاللہ وی ہوپ سو کہ ہم آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ سر, انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر. آپ نے تو پہلے اور دوسرے سوال دونوں کا جواب ساتھ ہی دے دیا, which is kind of you. Definitely child development is a critical aspect. اور آئی ہوپ سر اس پالیسی ڈائلاگ میں اور اس پورے جو سسٹم ایوالو ہو رہا ہے اس میں ویل اسٹارٹ پیئنگ آر ڈے کیئر اینڈ ارلی ایئرس ٹیچرس مور دین دا یونیورسٹی پروفیسرس. سو بیکاز دیٹ یہ سب سے بڑا فقدان ہے ہمارے سسٹم کا, اور جب تک یہ نہیں ہوگا وہ پیرٹی نہیں آئے گی, وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, اور وہ اس قسم کی کوالٹی نہیں آئے گی ارلی ایئرس میں. تو یونیورسٹی آپ انٹرپٹ کروں گا, سوری. ایک دفعہ ہمیں واشنگٹن ڈی سی میں کوئی 1.5 مہینے کا ایک کورس کرنا پڑا تھا آج سے 20 سال پہلے 2000 میں. تو ہم ارلی گریڈز میں زیادہ وہ کام تھا ہمارا. میرے پاس ایک پورا ڈیلیگیشن 20 لوگوں کا میں لے کے گیا تھا ٹیچرز کا. تو ایک اسکول میں ہم نے پوچھا ایک ارلی گریڈ ٹیچر سے کہ آپ کا جو سیلری پیکیج کیا ہے. تو ہمیں تو تھوڑی سی حیرانی ہوئی کہ وہ تو کچھ یونیورسٹی پروفیسر سے بھی زیادہ بہتر تھا. دے آر مور ایکسپینسو. اور یہ اس بات کی انڈیکیشن تھی کہ ارلی گریڈ از دا موسٹ امپورٹنٹ فار دیم, کہ جہاں جتنی انویسٹمنٹ کریں گے اس کے نتائج ہم آئندہ فیوچر میں پورے ملک میں بہت زیادہ لے سکتے ہیں. تو اب ہمارا بہت ضروری ہے, یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اب ہمیں ارلی گریڈ کے ٹیچر اور ڈے کیئر اور چائلڈ ڈیولپمنٹ کی جتنی بیسک ریکوائرمنٹ ہے ان پہ توجہ اور بجٹ الوکیشن نہیں کریں گے تو شاید ہماری یہ ساری باتیں ایک ڈریم کی حد تک تو ٹھیک ہیں, اور اس کو ریالٹی میں سے کنورٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہو. Absolutely sir, absolutely, and thank you for highlighting that. کیونکہ یہ میں نے دوسری کنٹریز میں بھی دیکھا ہے کہ سرکاری ٹیچرز ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں, جو بیس پے کے علاوہ ان کو ارلی گریڈ ٹیچرز کو ٹاپ اپ بھی دیا جاتا ہے with 5% 10% ان کی سیلری کا, تاکہ وہ ہر لحاظ سے کمفرٹیبل ہو. اور یہاں تک کہ کچھ ممالک ایسے اسکینڈینیوین کنٹریز یا جہاں سوشل پروگرامز بہت اسٹرانگ ہے کہ خواتین جو پروفیشن میں آتی ہیں ان کو اگر وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں میٹرنٹی لیو پہ جاتی ہیں تو فرام 1 year to 1.5 year تک پیڈ لیو سرکار کی طرف سے ملتی ہے, بیکاز ٹو ریٹین دوز ایکسپرٹیز ان دا پروفیشن. تو دیر از اسٹل اے لانگ وے ٹو گو, بٹ ان شاء اللہ آپ کی لیڈرشپ میں رہیں گے. اور اگر لیجسلیٹولی اگر ہم اس چیز کو بہتر کر لیتے ہیں, رائٹ ٹو ایجوکیشن کو ترمیم کرتے ہیں, اور وی گو ڈاؤن فردر کہ ناٹ 5 to 16 بٹ ایٹ لیسٹ فرام 3 years شروع کریں, تو کچی جماعتیں بھی اس میں شامل ہو جائے گی, اور ہمارے کریکولم کی لیجیٹیمیسی آ جائے گی, آفیشیل ٹیچرس کی ریکروٹمنٹ بھی ہوگی, اور جیسا اگر بجٹ ایلوکیشن بھی پھر ہو پائے گا جب رولز بن جائیں گے. تو لمبا سفر ہے سر, بٹ تھینک یو ویری مچ فار یور تھاٹس. ڈاکٹر سلما, would you like to share between question number 1 and 2 civil societies, academia کے perspective سے کہ are we preparing the right kind of professionals, جس کا ڈاکٹر طاہر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہمیں ٹیچرس چاہیے, کوالٹی ٹیچرس چاہیے, ہیلتھ کیئر چائلڈ کیئر پرووائڈرس چاہیے جو اس چیز کو سمجھیں, سینسٹیو ہو اس معاملات میں. تو where are we struggling? Are we doing what we are supposed to do? If I would look at the brighter picture and be optimistic on this beautiful Independence Day, I would say yes. It warms my heart to see a lot of successful young professionals around me who have graduated from the programs, from different programs of the universities, and they are serving as teachers or early grade facilitators. But on the other hand, my heart cries loud to say no, because the vast majority of young graduates are either jobless or they are ill prepared to fit the job market, no matter if they are a teacher or if they are working in any other job of the industry. I received a message the other day from one of my students, and unfortunately it was such a stark, harsh reality that the message was like, agar bacha jab pre-primary school
को कंप्लीट करता है तो he or she would know कि उसके बाद उसको प्राइमरी स्कूल में जाना है. प्राइमरी स्कूल कंप्लीट हुआ तो जो चाइल्ड इज अवेयर कि वो मिडिल स्कूल में जाएगा. मिडिल स्कूल की कंप्लीशन पे he has the high school, and after he or she and after the high school they have college, and then they look into the university life and they are more aspired to that. But once the university life ends, they don't know where to go, and it's such an unfortunate reality that we are not preparing the professionals who are prepared for the right kind of professions. If we look into the context of Pakistan, it has one of the larger labor force in the world, and it can definitely be a challenge to create enough adequate employment opportunities for all. But think about it, in the past 20 months or so, we have witnessed that machines are eating humans' job, they are eating the human talent. And it's not about the job that are in repetition or they are low skills. If we look into it, the online teaching became a dogma for everyone because we were not prepared for that. Even the basic of teaching through online forums was not introduced before. And if you look into this, how automation, robotics, algorithm, or artificial intelligence in recent time of COVID period, it actually shown us how they can equally work and sometimes even better work than human beings. So that's why it makes me think how machines are eating humans' job, and we are not preparing the professional for a certain profession up to the mark that is required. So in a country that has the sixth biggest population globally and a youth employment rate at 8.5%, I think this question is of great importance. If the young workforce is being provided with the right education, skill, and training to have a successful career. And if we look into the role of academia in preparing the right kind of professionals, I must say we are struggling on many fronts, but I would emphasize here on few of them. And the first one, which I would emphasize, is the stagnant traditional model of orientation. The model of orientation toward employability and career, that train people to equate what they do with who they are. We usually get to hear, what do you want to be when you grow up? Rather than focusing on acquisition of critical thinking and flexible skills and attitude that is required and prerequisite for them to fit in the rapidly changing world. The academia, mostly working with the Higher Education Commission and at the higher education institutions, I would always hear the word academia-industry linkage. But this academia-industry linkage, I think, shall not be entirely emphasized at the tertiary level. जैसे रफीक ताहिर साहब ने अभी बताया कि we need to think about कि किस तरह से हमें economic development और growth के लिए early child development level से ही ये debate शुरू करनी है. And following this traditional model, another challenge is the dogma to teach hard skills of specific field of study. How to teach, we will less focus on that. And the theoretical perspective of teaching are more focused. I wholeheartedly accept the practical knowledge is certainly important, but the soft skills, the interpersonal and transferable skills are just as important as hard skills. And we need to focus on soft skills. Think about communication skills, how important it is to explain one's point of view or share their ideas. Unfortunately, most of our graduates, and we are thinking that they are professional and they will go, they don't even know how to write on the whiteboard or how to use the blackboard, right? And they cannot even write one email or message, they cannot communicate their idea verbally or in written form. Another soft skill would be teamwork. No matter in what industry or in what field they would work, they would need this essential skill to work with others. And most importantly, in the last 20 months, if these last 20 months have taught us anything, it's that we have to be flexible and adaptable, the adaptability when reacting to change. And in these unprecedented, uncertain times, I think only those would thrive
or I would say survive, who can show resilience and adaptability. So adaptability without agility is not a good combination. So I think such sort of a training to train our professional for any field, we are not making them agile enough to get the opportunities that they have and not procrastinate on the things around them. And I can, it's heartbroken when I think, when I receive messages from my students who graduates and they ask, iske baad mein kahan admission? इसके बाद मैं क्या करूं? I mean, वो एक टीचर ट्रेनिंग डिग्री लेकर 4 साल की फारिग होते हैं यूनिवर्सिटी से, एंड गवर्नमेंट स्कूल्स तो forget about that, they have not even still accepted that teaching certificate. Even private school में जिस तरह से वो 7 to 3, 7 to 2 जिस तरह से वो उनसे पेपर वर्क और जिस तरह के काम उनसे करवा रहे हैं, just to make ये to put those tags कि ये experiential learning का स्कूल है, ये project based learning का स्कूल है, तो वो हमारा graduate परेशान हो गया है, वो ना वो adaptable ही नहीं है उसके according. And during the COVID, some of my students, when they wrote me कि हमें कहा जा रहा है कि आप तो fresh graduates हैं, आपको क्यों नहीं आती online teaching? So that was actually a very big question for me and for all of us being teachers, कि हमने इनको वाकई में ill prepare किया है for the field. And the third thing is, which goes to the second part of the question, is lack of civic engagement, and that runs even deeper amongst the youth. Our national curriculum framework or the national policy outlines civic education as an important aspect or component, but unfortunately, this very important combination of civic education as an important, in the civic lessons in the curriculum and provision of opportunities for students at school, college, and university levels. That is a totally missing link. We don't provide our children or our adults enough opportunities to volunteer with civil society organizations, because only such volunteer and internship opportunities would motivate the youth to be responsible citizen, because that's what the civic education defines, right? When we look at the definition of civic education, it says it empowers us to be well-informed, active citizens, and it gives us the opportunity to change the world around us. But unfortunately, when I look at it, or many of the other educationist, or I would say policy analyst, when we sit, and I am not a policy analyst at that level that I can express my opinion in such a way, but I would still think the more I look into these perspectives, unfortunately our academia has failed to encompass the most important aspect of civic education. Let it be political knowledge, let it be normative values, let it be individualistic civic behavior, and the communal civic behavior that we just discussed, the world around us, right? We cannot live in silos. Are we preparing our graduates enough? To abhi hamare jo school teachers hain, they have a totally disconnect with the middle school ka total disconnect hai, high school ka total disconnect hai university ke sath. अब जब वो यूनिवर्सिटी में हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स, so they come with a Pandora box, and I'm calling it Pandora box because वो इतने experiences लेकर आते हैं कि हम at the tertiary level can only influence those experiences. Unfortunately, उसमें हम कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं ला सकते. Before you begin the panel, Dr. Mithani rightly pointed कि the first 7 years, मैं तो अभी तक वो first 1000 days कोई नहीं कर पाई, absorb. कि अगर उसमें जो कुछ हो चुका हुआ है हम उसको ही नहीं कर पा रहे हैं, तो how can we think that a university graduate is prepared for the right profession or job or not? Think about the very common question: do our parents, our teachers or our school encourages independent thinking? Do our children or adult have the liberty to disagree or express the opinion? It would again remind
that such behavior transformation begins at a very young age, when the little ones would start to recognize the environment around them. And it all starts from encouraging their independent thinking. And if we, the majority answer to these two questions, if the parents, teacher, and school encourages independent thinking, or if the children or adult have the liberty to disagree or express their opinion, I think that we should not be surprised with the answer, since most of the parents and teachers, they would often act as dictator rather than learning facilitator. And when we think about this dimension, when one is forced to adapt others' opinion and is discouraged to engage with the society, one is likely to become apathetic. So instead of engaging our children at a very young age, and we deliberately engage them in the propaganda at school, street, mosque, and home, we need to expose them to civic education and employability skills. It's not that we will be teaching them the employability skills or civic education, but getting them exposed how to preserve the public goods, how to, such as environment, how environment, Ms. Kulsoom just said, कि हमारे स्कूल अभी प्लांटेशन ड्राइव कर रहा है 14th of August पे. So such sort of opportunities, to expose them to such sort of opportunities, and if they can partake in such activities or not. Because difference in education at early grade levels, that would mark actually the different kind of citizen that we all envision our youth to grow up into, And at the last, I would once again remind that the debate of academia-industry linkage shall not be entirely emphasized at the tertiary level. Rather, we would need to start thinking about the employability skills, the soft skills, and the inculcation of civic values and rights from early childhood education. The early grade educationist and the education would need to stop making all the same widgets. We would have to start accepting varied creative solutions instead of producing single right answer. We would need to encourage varied perspectives, curiosity, creativity, taking initiatives, multidisciplinary thinking, and empathy. These are the skills, interestingly, which are specific to human being, and the machine and robots cannot take them from us. Thank you, Dr. Salma. You've touched on so many points. ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ों को highlight कर रहा हूँ जो मेरे personal curiosity से करीब है. एक तो the whole debate about teacher training. I think ताहिर साहब भी agree करेंगे और मैं कुलसुम साहब भी agree करेंगे और खदीजा भी agree करेगी कि पाकिस्तान perhaps दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ हमारे टीचर्स सबसे ज़्यादा trained हैं. जितने भी प्रोग्राम आते हैं बेतहाशा ट्रेनिंग होती है. ट्रेन हो के अब वो इंसेंटिव बन गया कि हमें अलाउंस मिलेगा, इसलिए हमारी क्यू इतनी लंबी होती है ट्रेनिंग के लिए. ठीक है ना, इट्स अ रियलिटी. दूसरा नुक्ता, लैंग्वेज, ब्रेन डेवलपमेंट. आई गो बैक टू इट 2009 में मैंने पहली मरतबा समीना वाज पार्ट ऑफ माय टीम. हमने अर्ली इयर्स रीडिंग और मैथ प्रोग्राम के थ्रू, इमर्जिंग लिटरेसी के थ्रू, वी वर्कड ऑन मदर टंग. वी वर्कड ऑन 8 different languages in Pakistan to look at how cognitive development, the affective domain, or reading and comprehension, listening and comprehension. Unfortunately, इतना कमजोर है, और as a nation we are semi-lingual. हमारी कोई एक जबान भी पूरी नहीं आती है. ठीक है, और जब हम एक्सरसाइज करते थे कम्युनिटी में जाके, चाहे वो केपी हो या सदर्न पंजाब हो या सिंध हो या बलूचिस्तान है, looking at different languages, I used to ask my teachers, my colleagues, okay, what is your language of dreams? अगर आपकी लैंग्वेज ऑफ ड्रीम उर्दू नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, तो आप ख्वाब किस जबान में देखते हैं? अगर आप पख्तो में देखते हैं या सराइकी में देखते हैं या बरावी में देखते हैं, तो दैट इज योर लैंग्वेज, द फाउंडेशनल लैंग्वेज, और जिसमें आप क्रिएटिव भी हो सकते हैं. आप अल्फाज ढूंढते नहीं हैं, वो फरावानी से जो भी आप कहना चाहते हैं कह पाते हैं. आप एक तनकीदी जायजा ले पाते हैं. और हमारे यहाँ सिस्टम का डिस्कनेक्ट देखें कि हम मार के, सॉरी टू से,
مسلمان بناتے ہیں اردو میں پڑھا کے, اردو میں ٹیکسٹ. ہم نے ایسی کلاس روم دیکھی, آپ سب نے دیکھی ہوگی, کہ کلاس روم ڈسکورس مدر ٹنگ میں ہو رہا ہے لیکن اردو زبان میں وہ نہ ٹیچر اردو سمجھ پا رہا ہے, نہ بول پا رہا ہے, نہ بچے بول پا رہے ہیں. تو اس ڈسکنیکٹ میں کریٹیوٹی کہاں سے آئے گی, کریٹیکل تھنکنگ کہاں سے؟ ٹھیک ہے بے شک اسکلز ہیں, بٹ ایکسپریشن, برین ڈیولپمنٹ کا ایک لیفٹ رائٹ برین ڈیولپمنٹ کا ایک بیسک جز از کریٹیوٹی. اٹس پلئنگ وتھ ورڈس. اور ہم, آپ پلیٹو لے لیں, آپ کتنے سارے فلاسفرز لے لیں جو رائٹ برین کو ایمیلیو ریجیو میتھڈ لے لیں, وہ پلے بیسڈ ایجوکیشن کا مقصد ہی ہے کہ وہ کریٹو ایلیمنٹس کو آگے لائے جائیں اور اس بچوں کو انگیج کیا جائے. اور یہ پڑھانے سے نہیں آتا, انگیج کرنا ہے. اور یہی مسئلہ سب سے بڑا ہمارے اساتذہ ہے. مجھے آج تک کسی کلاس روم میں یونیورسٹی بہت کم ملے. If somebody would ask me, what do you remember from your school and college days? I don't remember the content. I remember the teacher who taught me to think differently. So never have I remembered کہ میں نے یہ content اس کلاس میں پڑھا تھا تو یہ مجھے آج کام نہیں. جو ٹیچر نے جس طرح پڑھایا تھا وہ مجھے یاد رہتا ہے. تو اتنا اہم نقطہ ہے یہ جو اب سب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز انسیکیور ہیں وہ, اور ہمارے جو, اور یہی ٹرینڈ چلا رہا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس میں. ہم سند یافتہ ہو گئے ہیں, ایک ڈگری کے بعد دوسری ڈگری, تیسری ڈگری, چوتھی ڈگری. سند یافتہ ضرور ہے ہم, لیکن ایجوکیشن جو پروسیس ہے ٹو لرن وہ مسنگ ہے کہیں پر. پروسیس آف ڈیولپمنٹ مسنگ ہے کہیں. تو آپ بے شک کورس کر رہا لیں, اور اتھارٹی کا ایشو آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور جیسے اس کی لینگویج کا ہے, ٹیچرس کی ٹریننگ کا ایشو ہے, برین ڈیولپمنٹ کے اسپیکٹس کے ایشوز ہیں. سو تھینک یو فار ہائی لائٹنگ آل دس. انڈسٹری کا ڈسکنیکٹ ہے, جاب لیسنس کا ایک ایلیمنٹ ہے, اور وہاں پر فار اے کنٹری لائک اس انٹرپرینیورشپ ایک بہت اہم ہے. بٹ ناٹ اونلی وی آر سیمی لنگول. اور ہمارے سر رفیق صاحب ایک جو مجھے ہے نا, ہمارے ایگزیکٹو جو ہے چیف, جو جس پہ ایک مجھے لگتا ہے کہ وی آر سیلنگ آور سیلف شارٹ, از کہ اوور ایمفسس آن اردو. آئی ایم ناٹ اگینسٹ اردو, اٹس اے بیوٹیفل لینگویج, بٹ وہ ہمیں ایون لوکل لیول پر بھی ہینڈی کیپ کر رہی, بیکاز دیر از ناٹ مچ لٹریچر. اور پھر جو زبان جس طرح ایوالو ہوئی ہے وہ مشکل ہوتی چلی گئی ہے. جب ہم اسکول میں تھے تو اردو بڑی آسان تھی, اب جس طرح اردو ایوالو ہوئی ہے تو وہ تو پڑھی بھی نہیں جاتی اکثر. تو یہ بھی ایک ہے نا اہم مسئلہ ہے ایکیڈیمک کے حوالے. ریسرچ کا آپ دیکھ لیں, ایویڈنس کا دیکھ لیں, کوئی رجحان نہیں ہے. کوئی بھی آپ کہ میں نے کچھ سیمینارز کنڈکٹ کیے تھے اسلام آباد میں یونیورسٹی کے ساتھ, مطلب کہ اسٹیبلش ایسوسیٹ پروفیسرز اینڈ پروفیسرز, بیسک ریسرچ کے فنڈامنٹلز مسنگ ہے. تو ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ اٹ؟ تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہے نا اس کا سرا کہاں ڈھونڈے ہم. لیکن ڈاکٹر سلما, تھینک یو ویری مچ ٹو براڈنگ the landscape. ڈاکٹر رفیق طاہر صاحب, تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کروں گا. دیر آر سم گڈ نیوز. یہ جو آپ نے جتنی بات کی ابھی لینگویج کے ریفرنس سے, ابھی جب ہم یہ کریکولم کی ایکسرسائز, سنگل نیشنل کریکولم کی ایکسرسائز جب مجھے اس کا انچارج بنا, ہم نے شروع کی 3 سال پہلے, تو اس کے اندر ہم ایک کویسچن ڈال دیا تھا کہ لیٹس وی ہیو ٹو ایڈریس دا لینگویج کویسچن, لینگویج پالیسی پہ بات کریں. آپ کو پتہ ہے 74 سال پاکستان میں جب کبھی بھی منسٹری آف ایجوکیشن یا کسی لیول پہ بھی لینگویج کی بات آئی تو آگے سے ہمیں ایک ہی لفظ کہا جاتا, پلیز اسٹیٹس کو شوڈ بی مینٹین, نتھنگ ایلس. لیکن پہلی دفعہ جب مجھے بھی کہا گیا, اور میں نے بھی اپنے منسٹر کو, جب میں نے پرائم منسٹر کو پہلی بریفنگ دی تھی اور پریزنٹیشن دی تھی, تو اس میں ہم بھی کہہ رہے تھے کہ سر ابھی آپ نے سنگل نیشنل کریکولم پہ بات کر رہے ہیں, آپ ساتھ لینگویج یا میڈیم آف انسٹرکشن ان سب چیزوں پہ ایک وقت پہ نہ چھیڑیں, مسائل بنیں گے. بٹ آئی ایم ویری ہیپی ٹو شیئر کہ میرے منسٹر اور پرائم منسٹر کا لیٹس وی ہیو ٹو ٹچ اپان آل دیز تھنگ. ہم ان کو چھیڑیں گے اور ہم دیکھیں گے اس پہ کیا. اور ہماری 5 نیشنل لینگویج کانفرنسز جو کہ میں نے آرگنائز کی ڈیورنگ لاسٹ 3 years ٹو ایڈریس دا لینگویج کوسچن, 3 باتیں جو اچھی سامنے آئیں. پہلی بات یہ تھی کہ پاکستان میں انگلش کی بات کروں یا اردو کی بات کروں, دونوں ہم نے سبجیکٹ پڑھائے, آج تک ہم نے لینگویج نہیں پڑھائی. آپ 72 سال میں 74 سال میں دیکھیں, میں خود کیونکہ ان ساری چیزوں کا حصہ رہا اور ایز اے پالیسی لیول پہ بھی,
तो हम हमेशा इंग्लिश भी पढ़ाई तो एज ए सब्जेक्ट, उर्दू भी पढ़ाया तो एज ए सब्जेक्ट। तो व्हाट इज द मेजर चेंज नाउ जो नोटिफाई हो गई है? एक तो हमने जब करिकुलम बना रहे थे तो हमने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया कि इंग्लिश विल बी टॉट एज ए लैंग्वेज, नॉट एज ए सब्जेक्ट। और अगर आप हमारा प्री 1 to 5 का पूरा करिकुलम देखें, टेक्स्ट बुक देखें, इट्स अ टोटल मेजर चेंज। और मैं जो हमारे यहाँ पैनलिस्ट हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि हमारे करिकुलम को भी देखें और हमारी बुक्स को भी देखें, हमारे टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को भी और असेसमेंट फ्रेमवर्क को भी देखें। एक मेजर चेंज आई है कि इंग्लिश विल बी टॉट एज ए लैंग्वेज। और लैंग्वेज आपको पता है कि हमने चारों स्किल पे बात करनी है। आज तक हमने स्किल पे बात नहीं की, आज तक हमने मजमून पे बात की है, नॉलेज पे बात की है, लेकिन स्किल तो पहली दफा एक मेजर शिफ्ट हुआ कि नाउ द करिकुलम इज टोटली बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, ऑन द स्किल। तो एक और सेम हैपेंड विद द उर्दू। आपको पता है उर्दू में हमें सही नहीं आई जो हमारी अपनी जबान थी, तो अब मैंने इसके अंदर भी एक मेजर चेंज ये किया है कि लेट्स उर्दू आल्सो बी टॉट एज ए लैंग्वेज, नॉट एज अ सब्जेक्ट। तो उसके अंदर भी हमने स्किल पे एम्फेसिस किया है। और ये बात हमने सिर्फ करिकुलम में भी नहीं की, हमने किताबों में भी की है और हमने टीचर ट्रेनिंग में भी की है और हमने असेसमेंट में भी कहा है कि वहां पे भी अब हम स्किल टेस्ट करेंगे, नॉट द नॉलेज टेस्ट। आपको पता है कि हम सारी जिंदगी एप्लीकेशन, मज़ामीन और ऐसे और यही चीजें हम लिखते लिखाते रहे। स्किल तो एक तो ये दो मेजर डिसीजन, लेकिन एक तीसरा एक नई टर्मिनोलॉजी हमने ऐड किया। आप सारी बातों का खुलासा है इस टर्मिनोलॉजी में कि देखिए मैं सोचता पंजाबी में हूँ, मैं सोचता पश्तो में हूँ, मेरा इर्द गिर्द जो है वो पश्तो है, मैं सारा कुछ मैं पढ़ता हूँ उर्दू में हूँ या मुझे अंग्रेजी मेरे ऊपर एज ए सेकेंड लैंग्वेज बेशक सही वो पढ़ाई जाती बल्कि ठोस दी जाती है। तो हम मेरी जो कॉम्प्रीहेंशन है या जो मेरी बेसिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट या ब्रेन डेवलपमेंट होना था किसी और सब्जेक्ट में, वो हमारा कभी नहीं हो सका। तो अब हमने ये एक नई टर्मिनोलॉजी यूज किया है, लेट्स वी फोकस ऑन द लैंग्वेज ऑफ एनवायरनमेंट, नॉट उर्दू, नॉट इंग्लिश, नॉट पश्तो। आपकी लैंग्वेज ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, कि आपके इर्द गिर्द क्या है, आप उस चीज पे फोकस करें। तो हमारी पॉलिसी के अंदर ये भी एक बहुत बड़ी चीज आई है कि लैंग्वेज ऑफ एनवायरनमेंट पे फोकस करें। किताब हमारी अंग्रेजी में लिखी है, किताब हमारी उर्दू में लिखी है, लेट्स आपकी लैंग्वेज ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो पश्तो है, तो टीच योर स्टूडेंट, टीच योर लर्नर इन पश्तो। और बेशक सब्जेक्ट यानी एक्सप्लेन जब कर रहे हो तो आप पश्तो का आप अपना एक बोर्ड बनाएं, उससे आप हेल्प लें। तो मेरे ख्याल में एक तो ये बड़ी अच्छी पॉलिसी डिसीजन में तब्दीली आई है। और लेकिन इसका इम्पैक्ट नेचुरली आफ्टर 4-5 ईयर्स जब ये चीजें इम्प्लीमेंट होंगी और टीचर ट्रेंड होगा इसके मुताबिक तो ये चीज आएगी। और बड़ा मतलब जिसको आप कहते हैं ना कि और जो इसके साथ रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी कि जो हमारी किताबें हैं, मैंने तो आज तक किताब में यही पढ़ा कि 8-7 सफ़े का लेसन होता था, आधे सफ़े की एक्सरसाइज होती थी और टीचर इतना अच्छा फैसिलिटेट करता था कि पेज नंबर 10 पे चले जाएं, लाइन नंबर 6 to 12 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है। सो ये दिस इज बिकॉज आई हैव हेडेड एज अ डीजी एजुकेशन, एज अ जॉइंट सेक्रेटरी एजुकेशन, एज अ एमडी एजुकेशन, ये सारी पोस्टों में मैं रहा हूँ। तो ये चीजें हमने अपनी आंखों से ऑब्जर्व की। अब क्या हुआ कि आपकी किताब हमारी देखें, मैं डॉक्टर गजानी आपने भी शायद देखा है, ये नहीं जरूर देखें कि अब आपको लेसन 1 पेज का मिलेगा और 20 पेज की एक्सरसाइज मिलेंगी। ये हमारी जो 2 खवातीन यहाँ बैठी हैं, खतीजा भी हमारा हिस्सा थी करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स का, और जो अरूज हैं वो भी एक बहुत बढ़िया माहिर तालीम के तौर पे उन्होंने भी एक राइटर भी बनी हुई हैं, उन्होंने भी टेक्स्ट बुक्स डेवलप। तो चेंजेस आई हैं इस नए सिनेरियो में जो 16 से लॉन्च हो रहा है। आप इसके अंदर देखेंगे बहुत सी चीजें इंशाल्लाह आपको तब्दीली नजर आएगी। और एक बात जो मैं यहाँ जरूर करूंगा, अब जो सब ने थोड़ी बात उस पर भी की और एंड पे भी हम कंक्लूड करेंगे, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, अवेयरनेस। आप मेरे गांव में चले जाएं, हार्डली 1 hour ड्राइव फ्रॉम मैं बैरिया मेरा, तो 1 घंटे बाद मैं अपने गांव पहुंच जाता। मेरे गांव के बंदों को अब अवेयरनेस आ गई है कि हमारा बच्चा 3 साल का स्कूल में जाना चाहिए। ये इतनी बड़ी, एक जमाने में था कि स्कूल में लेके जाते थे तो कहते थे बच्चे की उम्र क्या है, तो माँ बाप झूठ बोलने में मजबूर होते थे, मेरा बच्चा 6 साल का, हालांकि वो 5 साल का, इसलिए कि हेडमास्टर कहता था दाखिला नहीं हो सकता। तो चेंजेस आई हैं, लेट्स वी इस पे डिबेट इस तरह से जारी रही तो इंशाल्लाह, और जितनी पॉलिसी लेवल पे भी
गवर्नमेंट सोच रही है। मुझे उम्मीद है कि अभी एक तो हमने जो अच्छी खूबसूरत बात की है कि वी आर सिटिंग इन द वन बोट, मैंने सरकारी लोगों को भी बिठाया उसी किश्ती, मैंने प्राइवेट सेक्टर के लो कास्ट को भी बिठाया, मैंने फॉरेन सर्टिफिकेशन स्कूलों को भी इकट्ठा किया इसी नेशनल करिकुलम काउंसिल के सेक्रेटेरिएट में। और उसके अगर आप वीडियोस और मिजाज देखें तो शायद दैट इज द न्यू हिस्ट्री इन द कंट्री। तो सॉरी मैंने फिर दरमियान में ये लंबी बात की था कि ये बिल्कुल रेलेवेंट, थैंक यू सर, बिल्कुल रेलेवेंट है। मतलब कि मैं आपकी इस बात को बस एक सेंटेंस कह के फिर हम मैम उम्मे कुलसुम के पास चलते हैं कि मेरा थीसिस ये है कि देयर इज अ लैंग्वेज ऑफ डेवलपमेंट, देयर इज लैंग्वेज ऑफ लर्निंग एंड देयर इज लैंग्वेज ऑफ सोशल मोबिलिटी। हमें मतलब कि अक्सर पैनल्स पे डिस्कशन होता रहा पिछले 10-12 सालों में, हम पॉलिटिकल साइड ऑफ लैंग्वेज में उलझ जाते हैं, इलाकाई जबानों में उलझ जाते हैं, ठीक है, लेकिन nobody looks at a child or learning के लैंग्वेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, लैंग्वेज ऑफ लर्निंग क्या है और लैंग्वेज ऑफ सोशल मोबिलिटी क्या है। इफ ओनली हम इस डिबेट को ओपन करें और देखें यूनिवर्सिटी सतह पे, स्कूल सतह पे, और सबसे बड़ा चैलेंज सर ये होगा कि डू वी हैव टीचर्स? हमारे टीचर्स भी तो उसी रोट मेमोराइजेशन प्रोसेस का प्रोडक्ट हैं। और जब तक ये नेशनलाइज होने के बाद आप देखें जो सिलसिला निकला है हमारे टीचर्स का, बैच आफ्टर बैच, कोहॉर्ट आफ्टर कोहॉर्ट, इस निजाम से एवरी सिंगल, और जो टीचिंग प्रोफेशन को अज्यूम करते हैं नहीं भी करते, दे हैव ऑल रोट मेमोराइज्ड, दे हैव लर्न थिंग्स टू फॉर एग्जामिनेशन। तो ये चैलेंजेस तो हैं, लेकिन लेट्स होप एक एक करके हम इनको हल करेंगे। मैम उम्मे कुलसुम साहिबा, ओवर टू यू, जनरल सिनेरियो, और फिर आपका अपना एज अ टीचर, एज पाकिस्तान टीचर फोरम जो आप हेड कर रही हैं ICT के चैप्टर को, आपके तजर्बात अर्ली चाइल्डहुड के हवाले से इन द ओवरऑल स्कीम के कहाँ ये डिस्कनेक्ट है और क्यों आज हम इस मसले का हल ढूंढ भी पाते हैं तो कुछ कर नहीं पाते, एंड where have we failed over the, like it's been decades now, मतलब के टाट वाले स्कूल से निकलने वाले भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स बने हैं। आज हमारे टीचर्स हैव बेटर रेन्यूमरेशन, बेटर एनवायरनमेंट, पब्लिक सेक्टर में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी, येट quality of teaching, quality of engaging students, quality of learning has consistently gone down. Over to you, ma'am. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Sir Rafiq Taher. You are an experienced and mashallah very well qualified for single national curriculum program also. इनके साथ मैंने during my service I worked with him. He is a very hardcore person and I know. ये कहते थे कि मैं बैठता हूँ यहाँ काम करने, तुम लोग क्यों नहीं बैठते? तो हम लोग बैठ जाते थे, इनके साथ काम करते थे, and he knows me very well. Sir, actually अभी मैंने इतनी बातें सुनी हैं and I was like thinking कि we all start thinking about training and we are thinking about developing trained force in Pakistan and forcing early childhood education in Pakistan. Inshallah, we will come to that peak also, that summit also. Being a child development and psychology teacher and being a researcher also, I did my first research in 1983 and I went to Gilgit-Baltistan. I stayed there for 1 month and my thesis was child rearing practices in Baltistan. That's a very traditional folklore civilization and society. But over there, my observations were that mothers were more bounded to their children than fathers. And then I just started probing into what is the basic thing in between that. We are all talking about training and putting into practice in schools and in colleges. But actually, Dr. Saab, what my experience is that, and what child development and human development says so, because I would talk in scenario of human development and human ecology, where a student, you can say, when he enters into its 16th year of education, the 12 years, we should provide a pathway to early education. One who wants to study this subject or one who wants to go into the training of this subject, only that population will help out into next 5 years, because having been trained for early childhood education is not a 1 month training, or we cannot just
कहते हैं ना दरिया को कूजे में नहीं डाल सकते. It's a very in-depth subject, and we talk about 4 to 5 years pre-1. What happens between before 4 years of age, like when a child is not even born? The prenatal stage, when his brain is developing, when a mother's bonding is developing, when the child comes into this world, what happens when it's a postnatal stage? How do we control the anal stage? How do we control the irrational ego and superego stage? It's all mother's work. It's all the environment work. So when a mother starts preparing its child for school, have you ever thought about that mother or the parents, that how they are going to prepare the child for pre-1 and then prepare herself to see the possibilities of SNC being practiced in Pakistan? How she is going to develop a bonding between her child and her child's school activities and all these things to make it more successful. What I want to talk about over here is that it's a very as a complex whole, it's a human development question, not only child development. Here, I would like to say this, I think we should engage all the institutions in developing a pathway for this project. And we should not only involve and engage our institutions, we should also engage our researchers for a very, very positive and appropriate reinforcement of this program, not only the program, but early childhood education in Pakistan. The effective and the most effective way of applying this program would be through our institutions. Positive and appropriate reinforcement of skilled teachers is very important. The behavior of our institutions are very important. We have got, I think, 31 educational institutions in Islamabad only, leave alone the whole Pakistan. I'm talking about the undergrad and the postgraduate institutions. I would like to give some information about what we are right now talking about, ECE. This subject was first introduced in Pakistan in Lahore College of Home Economics in 1956, when the college was born. Over there, we have a history, because I'm a Lahore graduate from College of Home Economics. So we used to study this thing, that how this thing came into Pakistan. This was a UNICEF project to start in Pakistan. But then there were hundreds, thousands of graduates in child development from Lahore Home Economics, from Karachi Home Economics. Then in 1989, this College of Home Economics started in Islamabad. I'm talking from the point of view of institutions. The institutions should be empowered to give space to our new generation to go into this subject of teaching the early childhood stage. And then within the undergraduate program, a child starts learning, that is the process of not only academic, but also it's practical training also. We say when a student is a graduate, and because I went into this training for 1 week, and I saw that most of the teachers were just trained graduate teachers, and they were into this job because they had this opportunity to go into this job from class 1 to 5. And they also shared their problems in getting into early childhood education because it's a very complex academia. And it's not just कि आपने 1 महीना training ले ली और आप किसी भी ECE में जा करके अपना काम कर सकते हैं. To be honest, extensive rehearsals of old and new programs in ECE is needed over here at academic level. Then there is a lot of guidance needed in desirable social skills and facilitations of positive interaction with the institution and government. Government itself has an institution of Ministry of Education where they have worked for this SNC. It's an institutionalized project, Then we have to go into, we need to see what is the behavior between peers and adults to accept this program in Pakistan, and the implementation and assessment of the program. Then there is an interpretation, or you can say the incorporation of adequate knowledge that is needed to incorporate this program into institutions. Of course, the head of the institutions need to be trained for this, to control the environment for a positive outcome of this program. Over here, I would like to say one thing, that we say
what I have observed over here since SNC has been for the last 3 years, एक trend बन गया ECE का. Actually, ये जो training सारी दी जा रही है, yes, they are all, माशाल्लाह, Arooj is a very capable educationalist, खदीजा बैठी हैं, trained हैं, माशाल्लाह, सब कुछ है. लेकिन अगर हम इदारों में इन चीज़ों को ऐड करें, इनकी करिकुलम में, इनकी स्कीम ऑफ स्टडीज़ में, तो हमें मेरे ख्याल एक बहुत अच्छी जो 64% यूथ है, वो हमें नेक्स्ट 5 years में मिल जाएगी, जो इसको ले करके टीचिंग में स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे हमारे ग्रेजुएट्स होते हैं जो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं और बहुत कुछ ट्रेनिंग ले लेते हैं, लेकिन टीचिंग में सिर्फ 5% या 3% जाते हैं. तो हमें बेसिकली इसको बहुत इनकरेज करना होगा, प्रैक्टिशनर्स को, व्हाट आई कॉल टीचर्स को मैं प्रैक्टिशनर कहती हूँ, दोज हु एक्चुअली प्रैक्टिस दिस थिंग इन देयर इंस्टीट्यूशंस. And I need to focus on health of the mothers also over here, इसलिए क्योंकि स्कूलों का इंतखाब और बच्चों की तालीम का तरीक़ाकार माओं के हाथ में, घरों में बहुत इख्तियारात होते हैं. माओं की जनरल हेल्थ, बच्चे का मेंटल हेल्थ, ये बहुत इंटरैक्टिव होना चाहिए. पाकिस्तान को एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी के लेवल पे मदर्स हु आर, जो कि कहते हैं ना फैमिली वे में है, इनके लिए स्पेशल इदारे होने चाहिए जो इनके होने वाले बच्चों के मेंटल हेल्थ, माओं की सोशल हेल्थ, माओं की इकोनॉमिक हेल्थ, इन चीज़ों को देखें. देखिए, एक माँ है जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है, और गवर्नमेंट इदारों में तो माशाल्लाह किताबें भी सुना है कि फ्री देंगे प्री-1 को, लेकिन उसको हम कैसे तैयार करें कि आप अपने 4 साल के बच्चे को स्कूल में डालें, क्योंकि इस बच्चे ने, फिर वो कहेगी अच्छा इस बच्चे ने पढ़ के क्या बनना है, इसका बाप पढ़ के क्या बन गया, वो भी तो मैट्रिक पास है और जो वो कमा रहा है वो नहीं कमाएगा. हमें माओं की तरफ बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि जो आपके इदारे हैं जो ये दे रहे हैं आपको प्री-1 का प्रोग्राम, इनको एक इंटरैक्टिव सेशंस ना न्यू मदर्स के साथ भी करना चाहिए. और मैं चूंकि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी की हूँ, तो मैं ज़्यादा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे बहुत जाती हूँ. आई रियली प्रेफर कि जो इमोशनल, मेंटल एंड कॉग्निटिव हेल्थ है ऑफ द चाइल्ड, that actually builds a pathway of success in education of the child. So from a very irrational mind to a very rational mind, ये जो pathway है, ये जो years हैं 3 साल पहले, वहीं उसको स्कूल में कामयाब करेंगे, या नहीं तो उसके साथ स्कूल को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. एंड आई थिंक सिंगल नेशनल करिकुलम में मैंने अभी जो ट्रेनिंग ली है SNC की 1 वीक की, उसके अंदर जो मैंने प्रीमियर देखे हैं, जो बुक्स देखे हैं, जो टेक्स्ट देखा है, वो बहुत कुछ इन सवालों का जवाब इंशाल्लाह देगा नेक्स्ट 5 years में. और हमारे पास एक बहुत अच्छी हेल्दी क्या कहते हैं बच्चों की पॉपुलेशन आगे आएगी क्लास 5 तक, जो अगर इसको इंशाल्लाह कामयाब हो जाए. लेकिन एक चीज़ और मैं सर कहूँगी डॉक्टर साहब, अगेन आई एम रिसर्चर ऑल्सो, आई ऑब्जर्व कि रीड राइट के ऊपर बहुत बात होती है. वेयर इज़ द क्रिएटिव एलिमेंट, वेयर इज़ द क्रिएटिव एक्टिविटीज़, वेयर इज़ द क्रिएटिव चाइल्ड that we need to build into the institutions, the space for a creative child also. And when we talk about building foundations for a healthy nation, of course, we need very healthy children for a healthy nation. We need a very healthy teachers, mentally, socially, economically, academically. We need a healthy, बहुत एक अच्छी टीम चाहिए जो इसको लेकर के इम्प्लीमेंट करे. इसके अंदर इदारों के हेड से लेकर के नीचे टीचर्स तक, इदारों के अंदर करिकुलम अंडर ग्रेड से लेकर के पोस्ट ग्रेड तक, स्कीम ऑफ स्टडीज में. अब मिसाल के तौर पे करिकुलम डेवलपमेंट तो हम लोग एज एन ऑफिसर करते रहे हैं, क्योंकि हमें कहा गया है कि आपने जी FSC होम इकोनॉमिक्स बनाना है तो आप एक डेवलप करें करिकुलम. लेकिन ये एक सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट्स को ऑफर करना चाहिए क्या, ताकि हमारी नई लड़कियां और लड़के समझें कि करिकुलम कितना इम्पोर्टेंट होता है. नॉट ओनली कि ये जो एक सिंगल नेशनल करिकुलम है, बट ऑल्सो जिंदगी में भी करिकुलम बहुत इम्पोर्टेंट है. हम सब किसी पाथवे पे लेकर के आगे जा रहे हैं अपने आप को. आज हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह सिंगल नेशनल करिकुलम इम्प्लीमेंट होगा और पाकिस्तान विल सी अ वेरी हेल्दी नेशन अहेड इन 5 years. 5 साल के अंदर चेंजेस महसूस होने शुरू हो जाएंगे. और बाकी सारी बातें तो डॉक्टर सलमा ने बहुत कुछ कह दी हैं इदारों से रिलेटेड. बाकी देयर इज अ लॉट टू डू विद इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटीज, क्योंकि ये पाथवे वाला काम नहीं होता. यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन होती है. जब बाकी स्टूडेंट जब
ग्रेजुएट करता है वो सबसे पहले देखता है मैं कहीं इंटर्नशिप कर लूँ, मैं कहीं जॉब कर लूँ, जॉब मार्केट को देखता है, लेकिन बेसिकली उसको तैयार करने का टाइम तो निकल गया ना। हमने उसको एक इंटरमीडिएट के बाद कोई पाथवे नहीं दिया, हमने उसको सिर्फ सब्जेक्ट सिलेक्शन दिया, यानी वी जस्ट गेव हिम अ बुक दैट इज नोन एज द प्रोस्पेक्टस, टिक मार्क ऑन द फॉर्म कि आपने क्या पढ़ना है। काउंसलिंग, गाइडेंस, पाथवेज, ये वो स्टेज है। आप ग्रेजुएट हो जाएं, बीएड कर लें, अच्छा मैडम मैंने एमएड कर लिया, मेरे पास कितनी लड़कियां आती हैं मेरे सेंटर की इंटर्नशिप के लिए, उनका मैं प्रोफाइल देखती हूँ, मैं कहती हूँ बेटा आपने साइकोलॉजी में बीएस किया है, व्हाई डोंट यू गो अहेड। नहीं जी आई कांट अफोर्ड, मैंने बीएड कर लिया ओपन यूनिवर्सिटी से, मैंने एमएड कर लिया ओपन यूनिवर्सिटी से, गुड, यू आर गुड एजुकेशनिस्ट एजुकेटर, बट यू नीड सम मोर ट्रेनिंग्स, एक अच्छी ट्रेनिंग जो कि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है बल्कि आप इस इदारे में जाएं, क्योंकि हमने तो उनको रास्ता दिखाने के वक्त तो हमने सिर्फ दाखिले किए हैं। उसके बाद जब वो जाती हैं यूनिवर्सिटीज में बड़ी बड़ी इंटरनेशनल, क्योंकि इंटरनेशनल में जाती तो मुझसे वो आती है लिखने के लिए रेफरेंस लेटर्स, तो जाहिर है वो मेरी स्टूडेंट होती है, मुझे पता होता है शी इज ए ग्रेडर एंड शी इज वेरी गुड, लेकिन हम फिर उनकी काउंसलिंग करते हैं, आपने अपनी ग्रेजुएशन बेटा सोशियोलॉजी में की, व्हाई गो फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। अब उसका जो समझने का वक्त है वो तो निकल गया, समझाने का वक्त रह गया, तो लिहाजा we need to do a lot at this stage in institutions and link institutions with all the program। हमारी जो heads होते थे जिस वक्त हम होते थे वहाँ पे हमें वो engage ज़रूर करती थी, लेकिन policy making के time पे we were not there। So ये तो from the grassroots level in idaras, head of departments or people working for curriculum, and then towards where the scheme of studies are approved and where our policies are approved, ये एक रास्ता बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर और काम हो सके। फिर कम्युनिटी को एंगेज करना बहुत ज़रूरी है। दोज इदारास हु आर डूइंग एसएनसीज मस्ट एंगेज देयर कम्युनिटीज। मुझे अभी एक प्रिंसिपल मिली मेरे ट्रेनिंग के दौरान, उसने बड़ा अच्छा काम किया। उसने कहा मैम मेरे स्कूल में ना बाहर चौकीदार की छत नहीं थी। अच्छा मुझे याद है एफडी ने, शायद सर को भी याद होगा, इन्होंने ही एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, पेरेंट टीचर एसोसिएशन जो बनाई थी आप लोगों ने, उसके अंदर मैं वॉलंटियर थी, लाइजन एज यूजुअल, जैसे मेरा वॉलंटियर मेरे अंदर एक पैदा हुई हुई है ना, वो अभी तक जिंदा है, तो मैंने कहा नहीं चले होम इकोनॉमिक्स से मैं लाइजन होंगी। सर वहाँ पे जितने भी पेरेंट्स थे जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे F72 में, उनमें से सिर्फ 2 ने रिस्पॉन्स किया। इसको भी सर रफीक ताहिर साहब आप इसको अलाइव करें, फिर से कम्युनिटी को एंगेज करें, उन पेरेंट्स को एंगेज करें फिजिकली स्कूल के साथ जिनके बच्चे 4 to 5 में प्री 1 में हैं या 1 to 5 में हैं। उसके अलावा आप ये देखिए मेरे बच्चे कॉन्वेंट से पढ़े हैं, देखिए मैं खुद मिशन स्कूल लाहौर की पढ़ी हूँ, कैथेड्रल की ग्रेजुएट। मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है स्कूल के लिए अपने आप को वॉलंटियर करते हुए, कहाँ ज़रूरत है, वी आर हियर। ये हमारे इदारों में हमारे हेड्स को, हमारी हेड मिस्ट्रेसेस को, इदारों को, इदारे चलाने वाले इदारों को इस चीज़ के ऊपर भी हमें बहुत एंगेज करना पड़ेगा, इसको कामयाब करने के, टू गिव अ वेरी सक्सेसफुल रेट ऑफ इनपुट ऑफ स्टूडेंट्स एट प्री 1 to 5, नॉट ओनली 5 बल्कि मैं कहूँगी प्री 1। और बहुत कुछ इदारे के ऊपर देखना होगा मिनिस्ट्री को एसएनसी की कामयाबी के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई हैं मेरी ट्रेनिंग के दौरान, और टीचर्स का ये कहना है कि हमारे जो हेड्स हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम सेक्शन वाइज अपने और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत पेरेंट्स अब आ रहे हैं क्लास 4 के एडमिशन के लिए, प्री 1 के लिए, वरना तो स्कूलों में प्री नर्सरी प्रेप ये चीज़ें होती थी ना। मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, 4 साल की उम्र में बच्चा आएगा, प्री 1 पढ़ेगा, बेहतरीन प्रीमियर है सर, इंग्लिश उर्दू मैथ का, वेरी वेल डन। और वो अगर इम्प्लीमेंट होगा तो दे विल गो अहेड फॉर देयर प्राइमरी एजुकेशन। बाकी बहुत सारी बातें ये लोग कर चुके हैं, तो लिहाजा आई डोंट वांट टू रिपीट। I always prefer to see the baseline of any activity that has been done at both community level and both institution level. Thank you so much. You're most welcome, ma'am. Excellent thoughts. और आपने भी बहुत सारे इश्यूज जो पर्टिनेंट हैं, कनेक्टेड हैं, जो ताहिर साहब ने कहे, जो डॉक्टर सलमा ने कहे, तो क्वेश्चन वहीं आ जाता है कि अगर हम बच्चे की डेवलपमेंट चाहते हैं, फाउंडेशंस बेहतर करना चाह रहे हैं, we know where to start,
and there are بہت سارے ایونیوز ہیں جہاں پہ ہم شروع کر سکتے ہیں اسپیشلی ارلی ایئرس کے حوالے سے. بٹ کیئر گیورس, ٹیچرس, انوائرمنٹ, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کبھی میں اس ڈبیٹ میں بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے ابھی بھی بیہیویئر چینج یا اسکل سیٹس یا ایک اسٹرکچر میں ڈیولپمنٹ کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایز اپوز ٹو لوکنگ ایٹ فرام اے براڈر پرسپیکٹو. ٹھیک ہے, ٹیچرز ہمارے آئی تھنک بگیسٹ چیلنج, آپ کسی طرح بھی دیکھ لیں, they don't read, they don't write, they are not creative, they stick to the textbook. ٹھیک ہے, اور انہیں پہ ان کا اسیس کیا جا رہا ہے. لیسن پلانس جو بھی بنتے ہیں وہ سیکروسینٹ ہو جاتے ہیں, اسی پہ ان کا ایویلیوشن کیا جاتا ہے. تو اگر ٹیچر کریٹو نہیں ہے, ٹیچر اوپن ڈبیٹ نہیں رکھتا, ٹیچر کریٹیکل تھنکنگ نہیں کر سکتا, اسے نہیں پتا, ہی فیلز ولنریبل کہ میری ہے نا خامیاں یا غلطیاں سامنے آ جائے گی ایز اے ٹیچر, میری اتھارٹی چیلنج ہو جائے گی, تو وہ کارپورل پنشمنٹ, کلاس روم مینجمنٹ سخت ہو جاتی, بچوں کو اسی میں قید کیا جاتا ہے. تو یہ اتنے سارے ریلیٹڈ ایشوز ہیں کہ اگر ہم ٹیچرس کو ٹرین کرنا, مطلب کہ رفیع صاحب کو پتا ہے کہ ہمارا کوئی ایسوسیشن بہت بڑا ہے, تو اور سمینہ بھی جانتی ہے کہ میں اکثر اپنی ٹیم سے کہتا تھا کہ ٹیچر ایجوکیشن, اینڈ آئی ہیو بین پارٹ آف آخن یونیورسٹی, آئی ای ڈی سے میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا کچھ عرصے کے, 8 years I've spent there, اور ہماری ڈبیٹس اسی حوالے سے رہتی تھی کہ should we be training teachers or should we be educating teachers. سرکس کے جانوروں کو ٹرین کیا جاتا ہے. I'm sorry I'm being harsh right here, but we need to educate, appeal to the predispositions, appeal to the belief system. If we really want teachers to move forward, ٹرین تو آپ کر دیں گے, اٹھ جائیں گے, بیٹھ جائیں گے, ڈسپلن کریں گے, 40 منٹ کا ہے, اسکیم آف اسٹڈیز بنا لی, لیسن پلان کر لیا, باہر سے آبزرویشن آ گئی, بٹ آر دے ریئلی ان ٹو ایجوکیشن؟ تو یہ اتنی ساری ڈبیٹس ہیں, اینڈ دیر از نو سمپل آنسر. سو سوری آئی ایم شیئرنگ مائی اوپینین اباؤٹ اٹ, بٹ آئی فیل پیشنیٹ کہ اباؤٹ دیز سبجیکٹس, اینڈ آئی فیل کہ وی ہیو مسڈ دا بوٹ سو ٹو اسپیک آن سو مینی اوکیزنس, and we can't afford to do that anymore. But then میں اکثر کہتا ہوں اپنے colleague سے کہ how many generations will we end up wasting before we get our acts together? And we are deficit model ہے. ٹھیک ہے, تو اس سوال کے ساتھ, اس thought کے ساتھ I'll go to Aisha. Aisha, over to you, because you bring in the social dimension to it, the whole rights based. So over to you. So, Dr. Saab, one thing that I've been thinking about, as all the other panelists have been sharing, and some amazing insights from people that are so experienced, کہ کیا نہیں ہو رہا اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے at various levels. میرا query ہے وہ یہ ہے کہ what do we inherently value as a society? ٹھیک ہے جی, جب آپ کے پاس رفیق طاہر صاحب نے بھی اس پہ انڈیکیٹ کیا کہ hopefully we'll get to a time where caregivers or early childhood educators are being paid more. So economic compensation is one parameter of value in a society, but it's also everything else, respect. What are those things, what are those professions that we respect in a society? What are the aspirations in a society? اور میں آپ کو ایک پرسنل اینیکڈوٹ اس پہ شیئر کروں گی. سو وین آئی گوٹ انٹو دس فیلڈ, میرا پریویس جو ہسٹری تھی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں تھی. مائی لاسٹ جاب واز ود دا ورلڈ بینک, آئی واز پروجیکٹ ڈائریکٹر ود دا ورلڈ بینک, اینڈ اسٹارٹنگ نگران واز it was accidental, it was not intentional, it was, and it's a long story and I won't get into it, but it happened, اب جب میں نے یہ کام شروع کیا اور ایئر ڈاؤن دی لائن میں نے سیکٹر کوئٹ کر لیا, تو میری اپنی والدہ واز لائک کہ تم اب اتنا پڑھ کے, اتنا تم نے اچیو کر کے تم بچے سنبھالو گی اور بچوں کے پیمپرز چینج ہوں گے, اور مطلب دس از دا لیول, سو اینڈ دس از, آئی ایم ٹاکنگ فرام مائی اون ہاؤس ہولڈ لیول, ٹھیک ہے, اینڈ مائی مدر از این ایجوکیٹڈ وومن, لیکن ایسپریشنز آپ کی سوسائٹی کی کدھر ہیں, یہی آپ کا ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے آپ کی ٹیچرز میں. And Dr. Saab, you really pointed this out well, and آپ سے پہلے میڈم کلثوم نے بھی اس پہ بات کی کہ جو آپ کی ٹیچر ٹریننگ کی, آپ
ٹریننگ آپ کراتے جائیں, qualifications آپ کراتے جائیں, آپ certificates دیتے جائیں, وہ اندر جو انسان ہے وہ بھی اسی سسٹم کا پروڈکٹ ہے. تو ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی جرنی ہے to unlearn and then sort of relearn, you know. So my hope really, and especially with this little experiment that we've done over the summer, is with really curating, creating, enabling a young generation of teachers جو اس پاور ڈائنامک کو بھی چیلنج کریں, جہاں پہ وہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں ایز بورڈ ہاؤس وائف نہیں آ رہی, یا کیونکہ اور کسی جو پروفیشن آف چوائس تھا اس میں ہمیں انٹری نہیں ملی, تو ہم اب اس میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, چاہے وہ پبلک سیکٹر میں زیادہ انسینٹیوز ہیں, پکی نوکری ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. بٹ ریئلی اٹ از اے ڈائلیما, the teaching profession is a huge dilemma. However, stepping back from it, ایک African proverb ہے جی کہ it takes a village to raise a child. اب وہ جو village ہے اس کو ہم نے in totality دیکھنا ہے, you know. So whereas we love targeting schools, and you know میرا personal وہ ہے favorite target ہے private schools, you know, so I can go on a large debate on that, لیکن it's also slightly unfair. Again, teachers پہ ہم بات کریں گے وہ بھی unfair ہے. جب بچہ, اور میں آپ کو اپنا ایگزامپل دیتی ہوں, جب نگران میں ہم بہت چھوٹی, اٹس اے ویری اسمال تھنگ, اینڈ ہم بس اپنی دنیا میں sort of کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں, لیکن میں اپنے پیرنٹس کو بھی ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیں بچہ جب آپ گیٹ پہ اتارتے ہو, ہمارے پاس آتا ہے بچہ, تو اس پہ آپ یہ مت سوچو کہ صرف میرا امپیکٹ ہے, جو چوکیدار ہے اس کا بھی امپیکٹ ہے اس بچے پہ, جو ہمارا گارڈنر ہے اس کا بھی امپیکٹ ہے, جو کیئر گیور ہے اس کا تو بہت ہے, پھر ٹیچر, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو بیسکلی what's happened in today's reality is کہ وہ we are a village less reality جی, سمجھ رہے ہیں. ایک انکریزنگلی کیپٹلسٹ جب ہمارا مائنڈ سیٹ ہو گیا ایز اے سوسائٹی, می, مائی فیملی, مائی چائلڈ, ٹھیک ہے جی, وہ بچہ ہمارا بچہ نہیں ہے, میرا بچہ ہے, اور میرے بچے کو میں نے کہاں پہنچانا ہے, ہارورڈ بھیجنا ہے, آئی وی لیگ بھیجنا ہے, تو میرا اس کے لیے گیم پلان ہے, اور وہ بچہ اس بیچارے گیم پلان کے نیچے بھی دبا ہوا ہے. اینڈ سیم goes for this is across the economic strata as well. تو جو collective aspiration ہے, where is the collective aspiration? جب collective aspiration کی بات آئے گی, جب ہم واقعی میں سمجھیں گے کہ یہ بچہ صرف ایک بچہ نہیں ہے, یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. And very honestly, I'll share an incidents کیونکہ میرا اپنا تعلق جو ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جینڈر کے ساتھ, you know, gender rights, gender equality, gender equity rather, and so forth پہ رہا ہے. اور ایک مجھے ایک بزرگ خاتون ملی who's worked extensively with children in a volunteer capacity, and I met her at the park just across the road randomly. اور ان نے مجھے you know, and I was putting the case to her کہ یہ کتنا ضروری ہے, اب یہ خواتین ہیں, they've studied and they should be pursuing their careers, and you know they also should have equal opportunity, why don't they have equal opportunity, تو ان نے کہا بیٹا یہ جو بچہ پالنا ہے یہ اکنامک contribution you can do because you are giving Pakistan a healthy, a sane-minded, emotionally stable, capacitated, enabled individual. This is also a contribution, you know. So we've got to also start questioning کہ ہم کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں. ہم نے ماؤں کو ڈس امپاور کر دیا جی, جو بہت شاید یہ اچھا نہیں لگے گا, and this is against again my career and you know what all of my development sector ساتھی جو شاید وہ یہ بات نہیں پسند کریں, but واقعی میں آپ نے عورت کو امپاور کرتے کرتے ماں کو کیوں ڈس امپاور کر دیا؟ Why have you taken away the fundamental role that a mother has with her child in her early years? اس کے بعد آتا ہے کیئر گیور, اس کے بعد آتا ہے آپ کا whatever ٹیچر آتی ہے, یا نیبر آتا ہے, یا the community as a whole آتی ہے. Mother is fundamentally important. مائیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بیچاری کے جو کام نہیں کر رہی, تو وہ you know کہ او میں تو رہ گئی زندگی میں نے تو اتنا کمپرومائز کر لیا. You know, they don't see کہ یہ جو بچہ ہے آپ کے سامنے, how fundamentally important is this child, and یہ کام جو ہے یہ کتنا fundamentally important ہے. And this is not to say that women should not be working, right? And when we are in a situation where women are working, and this is a healthy sign of a society,
پھر آپ کے کون سے پارٹنرز ہیں جو اس بچے کے ساتھ جو بچے کی ریزنگ کریں ان کولیبوریشن ود یو. آر دے the grandparents, are they centers like a child care facility, a day care, or etc etc. یہ بھی کوئی اتنا نیا فینومینن نہیں ہے. اٹس ناٹ این امپورٹڈ ویسٹرن ماڈل. آپ دیکھیں پہلے ہمارے گلی محلوں میں ہمارے نیبرہڈس میں عموماً ایک ایسا گھر ہوتا تھا جہاں پہ سارے بچے اپنے چھوڑ کے جاتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی, وہ کوئی ایسی فیملی ہوگی کہ جس پہ اعتبار تھا, جو پتا تھا کہ ہمارے بچے کی تربیت بھی ہوگی اور اچھی بات سنیں گے کریں گے ایٹسٹرا ایٹسٹرا. So those models exist. We've got to look at those models again. From a social development perspective, you can look at the problem from at either a micro level or a macro level. And macro level کی تو یہاں پہ بہت بات ہو چکی ہے کہ اسٹیٹ سٹیزن ریلیشن شپ کیا ہے. جو سٹیزن آپ تیار کر رہے ہو ملک کے لیے, وہ یونیورسٹی میں نہیں ہو رہا, وہ بچہ 5-6-7 سال میں آپ نے وہ تیار کر لیا سٹیزن. تو سب سے پہلے تو جو آپ کا سب سے what was your original question number 1 was, what's your personal opinion on why these years are important? There is no personal opinion, this is research fact. So no one can have another opinion on this کہ یہ کتنے ضروری سال ہیں. آپ ان سالوں میں خالی اور and also to take it away from the academics کہ وہ کتنا اچھا academically یا economically perform کرے گا in later life, وہ انسان کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کی کیا ویلیو سیٹنگ ہے, اس کی کیا کوڈنگ آپ نے سیٹ کر لیا ہے, وہ سیکھنے کو کس طرح دیکھتا ہے, what is he or she do they have a love for learning, or are they they've been put into a box so early on کہ ان کی وہ curiosity, imagination, inquisitiveness ختم ہو چکی ہے. پھر کیا وہ kind ہیں, کیا وہ اپنے سے باہر دیکھ سکتے ہیں, اگلے انسان کو دیکھ سکتے ہیں, کیا وہ معاشرے کو دیکھ سکتے ہیں, کیا وہ انوائرمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں, یا کیا آپ ایک انٹائٹلڈ اور می ٹائپ انسان مزید تیار کریں, جو ہم بائی اینڈ لارج ہم وہی لوگ تیار کر رہے ہیں. So at the micro level, when you look at the concept of it takes a village, so you identify all your players, and that's at the household level, that's at the neighborhood level, that's at the community level. There is a lack of communities, and why I'm so inspired by the north of this country is wahan pe community spirit zinda hai. There is still a collective responsibility around کہ یہ ہمارے بچے ہیں اور ان کو ہم نے, and that's why you see that they're far more progressive in their approaches to young children. ہمارے یہاں پہ تو اب یہاں پہ ڈائلیما دوسرا یہ آپ کے گیجٹس کا آ گیا ہے, اتنی زیادہ ڈسٹریکشن ہے, مدرس بھی ڈسٹریکٹڈ ہیں, آپ کے ہاؤس ہولڈ میں سارے ڈسٹریکٹڈ ہیں, بچوں کے ساتھ اتنا زیادہ بچے خود اتنا زیادہ یہ اسکرینز یوز کر رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی یو گوئنگ ٹو بی ہیونگ اے جنریشن آف مورونز جن کو بیسک بھی کمیونیکیشن اسکل بھی نہیں ہے, forget everything else, تو I mean, not to go on and on about this because I can. It's basic چیز ہے جی کہ ہم کون ہیں, who are we as a people, as Pakistanis, ہماری identity کیا ہے, ہمارے collective beliefs کیا ہیں. And why I was personally very excited about the SNC was that it brings in those things. It talks about a sense of collectivism, it talks about Iqbal, it talks about Jinnah, ان کی کیا vision تھی, ان کی کیا سوچ تھی. ہمارے بچے کو ایک sense of self worth ملے, rooted in their own, his or her own. This is an example I often repeat. اب دیکھیں ہم ان کو جب پڑھاتے ہیں, even something arbitrary, مطلب something completely unrelated like deforestation, تو deforestation آپ پڑھاتے ہیں Amazon کی. آپ کیوں Amazon کی پڑھا رہے ہیں, آپ بتائیں مرغلہ پہ کیا ہو رہا ہے, آپ بتائیں سوات میں کیا ہو رہا ہے, ان کو اپنا تو پتہ چلے. That's where all of the focus on the language is so important. And Rafiq صاحب نے correctly identify کیا کہ اردو میں بھی اپنی پھنسنا, you can go back into the language of the community or environment, but even Urdu I feel is a huge start, kyunki itna disconnect hai hamare, and I'm talking about the sort of the middle income and upper middle income, but also the lower middle income. Capacities nahi hai. So language is not just a skill or a tool, it's also where you draw your sense of self from, your sense of self-worth from. And given that it's the Independence Day today, we need more people that are more invested in Pakistan, تو ایسے بچے ہم بڑے کریں جو
क्रिएटिव भी हों, क्यूरियस भी हों, बहुत आइंस्टाइन भी बन जाएं, लेकिन वो मतलब वो पाकिस्तान के साथ भी कुछ कनेक्शन शो करें, वो पाकिस्तान को कुछ देना चाहें beyond themselves. So that's where I feel the effort really should lie. राइट्स की भी जब हम अमूमन बात करते हैं तो हमारा थोड़ा नैरो पर्सपेक्टिव हो जाता है, क्योंकि राइट्स में भी हम क्लेमिंग राइट्स की बात करते हैं कि ये मेरा हक है, हम हक देने की बात नहीं करते, you know. So it's really time that we started looking beyond ourselves, even in our personal roles. Am I a consultant? Am I a teacher? Am I an advisor? Beyond that, on a human level, what am I doing to help this process? You know, चाहे मेरे अपने घर के अंदर हैं बच्चे हैं, चाहे मेरी फैमिली के बच्चे हैं, चाहे वो ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे बच्चे दिए जा रहे हैं. So it's a time for reflection, जी. And more than external training, I feel like there's a lot of internal dialogue that needs to take place. That who are we? What is our values? And what kind of children do we want to raise and give to Pakistan? Thank you so much, Aisha. You have touched upon so many fundamental bits. And I'll just take 2 minutes before we hand over to Ma'am Khatija for closing remarks. You remind me of my days at teaching at Arakan University, what head teachers or principals ka ek group tha in a leadership program, or private or public sector. And I just school development planning ki baat ho rahi thi. And it's funny that you said, you know, what do we want as a child? You know, how do we want the nation to be built? Maine unse pucha कि what kind of schools do we, what kind of Pakistanis do we want? तो एक हमारे बहुत ही senior public school के principal ने कहा कि we want pure Pakistan for pure Pakistanis, and my jaw dropped. I said, what on earth does it actually mean? And then I realized we are such like a slogan-driven nation, or blindly follow the slogans. चाहे वो रोटी कपड़ा मकान हो the 70s या 80s का हो कि पाकिस्तान का मतलब क्या, या उसके बाद moderate enlightenment की बात हो जाए. Nobody sits down to unpack, reflect कि मेरी personal obligations क्या है. I'm reminded of Winston Churchill's phrase कि ना, we make a living by what we get. We make life by what we give. So giving पे तो कोई focus ही नहीं है. Consumption, consumerism और है ना gluttony पे focus है सारा. कि मैं कितना और जमा कर लूँ. So with that, I'll thank each and every panel member. We started late, so we're finishing late. I apologize for that. It's been a great contribution from everyone. और Dr. Salma, कुछ आप कहना चाह रही थी? Yes, I'm sorry. I'm aware of the time and everything, but one of the things that Aisha said, and I loved it, and I wrote it, you know, कि औरत को empower करते करते हम भूल गए हैं माँ को empower करना. It's such an interesting thing कि मैं एक woman forum पे गई in Turkey to represent Pakistan, और वहाँ पे ख़वातीन ने जो cabinet members थी, जो senators थी, जो ministers थी, उन्होंने अपने profiles में लिखा हुआ था mother. You know, their degree, where they work, it's like motherhood. We have totally forgotten about it कि वो हमारी एक reality है, वो हमारी एक identity है. So thank you very much for, you know, this is a tagline for me. I would on that note, I would like to say something. Please, Sorry, please, just one please thing. When we were studying this child development and psychology, we studied a very good theory. Give me the first 5 years of life, and I will give you a whole man. Rousseau used to say that. But we are such a gregarious people, and I'm happy to be part of this, you know, tribe of Pakistan. Like I feel like as if के यहाँ पर हर जगह आप जाएं तो एक छोटे-छोटे कबीले बने हुए हैं. आप जो बात करें ना slogan driven country, ये इसलिए है क्योंकि जब वो बच्चा घर से सुनता है ना, I remember one thing. First year की बच्ची ने क्या slogan लगाया था? Be Pakistani, buy Pakistani. I said, okay, so what are you wearing? She said, ma'am, right now I'm wearing, you know, imported stuff कोई उसने पहना हुआ था. मैंने कहा, but actually बेटा, when you say so, you should do that also. That makes you a complete person. तो कहती, okay. फिर उसने वो sticker लगा के रखा, लेकिन हाथ में उसके पास imported phone. That is the reality. Across the board, children actually learn what they live, na sir. We have to teach them.
Please, thank you. تو ایسا ہی ہے. اور ماں کی ذمہ داری, we forget being a mother, we actually absolve fathers as well in the process just because کہ they are bread earners. ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو ذہن سے نکال ہی دیں کہ مطلب کہ مجھے don't get me started on that one. So فادرز کے رول کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. انتہائی فضول جو ہے نا اس پوری کریشن کا حصہ ہے وہ ہمارے معاشرے کے فادر ہیں, جو اپنے آپ کو سیلف ایبزالو کیا ہوا ہے ہر معاملے میں. رفیق صاحب بھی ہنس رہے ہیں. سو میں تو آپ کی اس بات پہ تو بالکل تبصرہ نہیں کروں گا. میں دو چیزیں آدھے منٹ کی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک جو ڈاکٹر سلمہ نے جو ایک بات کی تھی وہ ڈسکنیکٹ کی, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا. اور 3 چیزوں میں وہ ڈسکنیکٹ ہے, جس طرح پرائمری, مڈل, ہائی, آگے یونیورسٹی ایجوکیشن, اور پھر اس کو آگے ہم لنکیج انڈسٹری کے ساتھ کر رہے تھے. میں اس پہ بتاؤں کہ ایک اچھا پالیسی ڈیسیژن ہو گیا. اس کریکولم کو ہم نے بنانے سے پہلے ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ہر سبجیکٹ کا ایک گریڈ بنائیں گے پری 1 to 12. تو اب الحمدللہ یہ چیز آپ کو اس آئندہ کریکولم میں, سنگل نیشنل کریکولم میں ملے گی کہ وہ جو ڈسکنیکٹ تھا وہ ختم ہوگا. آپ کو ایک گریڈ پہلے دن بن گیا, اب اس کی بنیاد پہ یہ سارے کریکولم, پہلے پرائمری کا, اب ایلیمنٹری کا یعنی مڈل کا ڈیولپ ہوا, آگے سیکنڈری کا, ایک ڈسکنیکٹ ختم ہوگا. دوسری امپورٹنٹ چیز کہ ہم نے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کے ساتھ مل کے ایک کمیٹی بنا دی, جو کمیٹی اب کام کرے گی لنکیج بٹوین ہائر ایجوکیشن اینڈ دا کالج ایجوکیشن, تاکہ ادھر بھی ایک بات ختم ہو جائے. اور ایک دلچسپ بات کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جب میں نے 60s میں ارلی گریڈ میں جب میں داخلہ لیا تو میں نے 2 سال گریڈ 1 سے پہلے پڑھا. ایک کا نام تھا کچی کلاس, ایک کا نام تھا پکی کلاس, اور that it was one. بٹ انفارچونیٹلی دنیا اس میں بہت آگے گئی, اور ہمارے پاس جو کچھ تھا کچی اور پکی, ہم اس سے بھی چلے گئے. تو 60 میں بھی ہمارے پاس تھا. تو یہ 2 چیزیں میں چاہ رہا تھا کہ شیئر کروں آپ سے. تو آپ کا thank you so much. Thank you so much, sir. And I'm grateful for all the participants جنہوں نے آج اس panel میں شامل ہوئے ہیں. And we had a good turnout. اور all the experts جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. I'm grateful for your time, for your commitment in this field. Meri apni personally, thank you so much. Over to you, Ma'am Khadija, for your last words. Thank you so much, Dr. Shehzad. Before we go to Ma'am Khadija, میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ آج یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ گیدرنگ ہے کہ جو ہمارا سفر ECE کا شروع ہوا اور جو خواب خدیجہ نے دیکھا اور مل کے I'm part of the team and I'm very proud. Sir Shehzad was there, Ma'am Samina was there, خدیجہ اس پہ ابھی ریفلیکٹ کریں گی وہ ہماری جرنی کیسے رہی. ایک چیز جو بڑی خوش آئندہ ہوئی وہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ECE کا جو پاکستان میں نیریٹو ہے وہ صرف خواتین ہی ECE کی ایمبیسڈر کسٹوڈینز ہیں. اس کورس میں ہمارے بھائیوں نے اور جو فادرز ہیں انہوں نے بھی حصہ لیا, اور کہیں کہیں تو گرینڈ فادرز بھی ہمارے اس کورس میں شامل ہو گئے. تو وہ ایک اتنی خوش آئندہ بات تھی. ابھی سر شہزاد نے تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ جو ارلی چائلڈہڈ کی جرنی ہے یہ خالی والدہ کے اوپر نہیں ہے. والد ایک اتنا اسٹرانگ پلر ہے کہ جو شروع کے امپریشنز بچے کے بنتے ہیں کہ سوسائٹی میں وہ اور لوگوں سے, مردوں یا عورتوں سے کیسے انٹریکٹ کرے گا, تو وہ والد اور والدہ یا جو ارلی کیئر گیورز ہیں وہی بنا رہے ہوتے ہیں. تو ود مچ اڈو the beautiful and resilient woman who is flag bearer of early childhood education, اور جو ripples یہ کریٹ کر رہی ہیں, جو ان کا پیشن ہے, اور جو اس کورس میں I am very humbled and honored that I was part of it. جب ہم اس کو بنا رہے تھے, اس کی ڈیزائننگ کر رہے تھے, جو سلیپ لیس نائٹس تھی اور جس پروسیس سے ہم گزرے, and what a phenomenal and successful story it is. So میں جاؤں گی خدیجہ کے پاس, she is the CEO of PEFEC, اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. خدیجہ, over to you. Thank you so much, عروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ تمام کو پاکستان الائنس فار ارلی چائلڈہڈ کی طرف سے خوش آمدید, اور آپ تمام کو یوم آزادی مبارک ہو. اور ڈاکٹر شہزاد کہتے ہیں ہم نعرے لگانے والے لوگ ہیں, تو I am one of them. I believe in نعراز, لیکن میں پھر اس نعرہ کو عملی جامہ بھی پہنانے کی کوشش کرتی ہوں. اور اس میں I am very lucky to be part of this alliance under the leadership of محمد رفیق طاہر صاحب. الائنس کو کس طرح سے ہم نے بنایا, اس میں پوری ہماری ایک جرنی ہے اب تک, جو ہم سٹیپس سے گزر کے اس سٹیج تک آئے ہیں.
बहुत इसमें हमने एक आई वुड से रिवॉर्डिंग हमने सफ़र तय किया है, और हर सफ़र पे हमें इतनी खुशी होती है कि हम पाकिस्तान को एक अच्छी नेशन देने की बात कर रहे हैं, और उस अच्छी नेशन की, हेल्दी नेशन की जो बुनियाद है वो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में है। और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में आप लोगों ने तमाम ने उस पर बहुत एम्फेसाइज किया है कि वो जो डेवलपमेंट वाला फेज़ है वो कितना अहम है, उसमें क्या कंट्रीब्यूटर्स है, किसने क्या रोल प्ले करना है। तो जो पाकिस्तान अलायंस है वो हम इस पे बिलीव करते हैं कि सोसाइटी का हर फर्द, not only just parents, not only just mother, every single member of the society is a contributor. उसने अपना रोल प्ले करना है, और जब तक हर बंदा अपना रोल प्ले नहीं करेगा, हम बच्चों को उनका जो ऑप्टिमम डेवलपमेंट है या जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट को हम प्रमोट करने की कोशिश करें, वो नहीं हो सकता है। माँ ने ऑब्वियसली अपना रोल प्ले करना है, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल विच अ फादर हैज टू प्ले। उस पर हमने बहुत सारे सेशंस किए हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च बेस्ड नॉलेज अवेलेबल आउट देयर, जिसमें बहुत क्लियरली ये बताया गया है कि फादर का इन्वॉल्वमेंट बच्चे की अपब्रिंगिंग में, बच्चे के डेवलपमेंट में, उसके आउटलुक में, उसका जो वर्ल्ड व्यू बनता है उसमें फादर के इन्वॉल्वमेंट के बाद या होने के बाद किस तरह का बच्चा ग्रो करता है, और जब अगर फादर इन्वॉल्व नहीं होता है तो उस बच्चे में क्या तशनगी रह जाती है, बहुत सारा अवेलेबल है। Now coming back to before going to the details of the course, I would really want to thank the honorable panelists. Thank you so much. आप लोगों ने इतनी यहाँ पर राहें खोल दी मेरे लिए। मैं तो डॉक्टर शहजाद कहता है कि आप लोग बस तुम तो काम के पीछे लगी रहती हो। तो मेरे ख्याल में जब तक हम नहीं करेंगे जो कुछ हम बोलते हैं या पढ़ते हैं, अगर उसको हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में हम फिर जस्टिस नहीं करेंगे अपने प्रोफेशन के साथ। I am so lucky to have such wonderful people around me, और जो अलायंस का एक मैंडेट है कि फर्दर हम अलायंसेस क्रिएट करें। आप जैसे प्रोफेशनल लोगों के जो स्किल्स है, जो आप लोगों का एक्सपीरियंस है, उस पे हम बिल्ड करें। और पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे पास 800 से ज़्यादा इंडिविजुअल मेंबर्स है, और तकरीबन 120 या 30 के अराउंड ऑर्गेनाइजेशंस हमारे मेंबर बन चुके हैं, और मज़ीद हम बना रहे। और ये इस दौड़ में हम इसलिए लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का पैगाम है, एक होलिस्टिक अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का पैगाम है, वो पूरे मुल्क में पहुंचे। ना सिर्फ माँ बाप तक पहुंचे, बल्कि माँ बाप तक पहुंचे। जो अभी मैम कुलसुम ने एक बहुत प्यारी बात की कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का जो चौकीदार है उसका भी अर्ली चाइल्डहुड, मेरे ख्याल में आयशा ने बात की कि ऑर्गेनाइजेशन का चौकीदार का भी एक रोल है, ठीक है ना, बच्चे के डेवलपमेंट पे। यानी वो बच्चे को कैसे वेलकम करता है, बच्चे की सेफ्टी का ख्याल कैसे रखता है, और जो बहुत सारी लवाजमात है उसमें वो अपना रोल कैसे प्ले करता है, उसका एक इम्पेक्ट है उस बच्चे के डेवलपमेंट पे। तो ये तमाम जो थीम्स है ये बहुत अहम है, और उनको सामने रख के पाकिस्तान अलायंस ने काफ़ी अब तक हमने चीज़ें की है। उन डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ जो हमने एक ऑनलाइन कोर्स चलाया जिसके बारे में डॉक्टर सलमा ने यहाँ पर कुछ बहुत पॉजिटिव रिमार्क्स दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर सलमा फॉर योर very active participation during the course, and also sharing your very positive remarks and appreciation. तो यही चीज़ें हैं जो हमें इंकरेज करती है, और फिर मज़ीद हम मेहनत करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा ऑनलाइन कोर्स था, जैसे उरूज ने कहा कि वी डिज़ाइंड इट वेरी केयरफुली, और इसमें जो हमारे रिसोर्स पर्सन्स थे उनमें I had a wonderful team of resource persons, जिसमें उरूज साकिब है, मैम समीना है। मैम समीना बहुत खामोश बैठी है, सुन रही है। वो उसका बड़ा एक एब्जॉर्बेंट माइंड है मैम समीना का। अभी इंशाल्लाह उनको भी हम मौका देंगे बाद में।
और फिर डॉक्टर शहजाद मिथानी जो हमें कहते हैं कि क्रिएटिव बनो और ये करो और क्रिटिकली सोचो, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर शहजाद मिथानी। और फिर राइट्स के हवाले से, चाइल्ड राइट्स के हवाले से जो अभी आयशा भी बात कर रही थी, तो हमें ट्रैक पे रखते थे कि नहीं ये चीज़ें राइट्स में शामिल है, ये चीज़ें जिम्मेदारियों में शामिल है। तो हमने बहुत इस दौरान एक लर्निंग जर्नी हमने तय की और इस कोर्स को डिज़ाइन किया। इसमें हमारे पास तकरीबन शुरू में 100 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया था। हम ये ऑनलाइन ऑफर कर रहे थे, लेकिन 100 से ऊपर हम नहीं जा सकते थे। सो उसमें हमारे जो पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ है, जिनमें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी पेशावर है, IBS सक्खर है, यूनिवर्सिटी ऑफ अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर है, फेडरल कॉलेज है, और इसी तरह से इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहालपुर है, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टूडेंट्स और फैकल्टी स्पेशली हरीपुर और बहालपुर और रहीम यार खान इस तरह की जगहों से जिन्होंने ज्वाइन किया था, उनको इंटरनेट के काफ़ी इश्यूज आए, तो वो इस कोर्स को कंटिन्यू नहीं कर सके। जिन स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया विद 80% अटेंडेंस, वो तकरीबन 76 स्टूडेंट्स है, जिनका हम बाद में इंशाल्लाह सर्टिफिकेट के लिए भी नाम अनाउंस करेंगे। और इन्होंने सिर्फ अटेंडेंस ही नहीं शो की, बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेशन इनका रहा। और दिस कोर्स वाज बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम, नर्चरिंग केयर फ्रेमवर्क और SDGs जो पाकिस्तान जिसके सिग्नेटरी है, और जो बहुत सारे इसके अर्ली चाइल्डहुड के जो फंडामेंटल्स है जिस पे हमने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया, जिसमें हम फर्स्ट 1000 डेज पे मैंने काफ़ी इनको रगड़ा। मैंने कहा फर्स्ट 1000 डेज जो नहीं सीखेगा वो ना टीचर बन सकता है, वो ना हेल्थ प्रोफेशनल बन सकता है, वो ना पेरेंट बन सकता है, वो ना केयर गिवर बन सकता है। ये समझने की ज़रूरत है। और ये फिर मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं दोबारा लिटरेचर, हमने एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, हम इनको लिटरेचर भेजते रहेंगे और इनका हम टेस्ट लेते रहेंगे कि ये पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। साइंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड के बहुत सारी हमने चीज़ें इनसे शेयर की और स्टूडेंट्स ने बहुत इंजॉय किया। और इनको जब हमने बाद में ग्रुप वर्क दिया और फिर इन्होंने जो प्रेजेंटेशंस की उस पे, तो मैं और उरूज कह रहे थे कि ये तो लगता है कि सब कुछ छोड़ के अर्ली चाइल्डहुड अमेजिंग। तो बहुत इनरिचिंग हमारे लिए भी एंड फॉर द पार्टिसिपेंट्स। और जो हमने रिव्यूज लिए, जो रिफ्लेक्शंस आए हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, बहुत इंकरेजिंग रिफ्लेक्शंस है। उसमें बहुत ज़्यादा जो कंटेंट हमने इस्तेमाल किया उसको बहुत सराहा है और मेथोडोलॉजी को अप्रिशिएट किया है। बहुत ज़्यादा जो इश्यूज आए हैं वो इंटरनेट से रिलेटेड है, और फिर चूंकि फेस टू फेस और ऑनलाइन का अपना एक अलग वो है, उसका खैर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मुमकिन हो सकती है जो ऑनलाइन नहीं हो सकती है, उस पे हमारे पार्टिसिपेंट्स ने कमेंट्स दिए हैं। तो कुछ जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, इंशाल्लाह हम अगले कोर्स में उस पे ज़रूर उसको एड्रेस करेंगे। बाकी जो हमारे कॉलेजेस और जो हमारे पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ से फैकल्टी और स्टूडेंट्स ने इस कोर्स में हिस्सा लिया है और बहुत इसमें अपना टाइम लगाया है, जिसकी वजह से ये बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तकरीबन 5 वीक्स का कोर्स था। इट वाज अ वेरी लेंथी एंड वेरी डिटेल्ड कोर्स, और तकरीबन 2 आवर्स टू 3 आवर्स तक बाज़ दफ़ा ये सेशन चलता था। और हफ्ते में हम कोशिश करते थे 3 सेशंस करें, कभी कभार 2 सेशंस भी हुए। इसी तरह से ये तकरीबन 5 हफ्तों में ये कंप्लीट हुआ है। और इसमें जो मेथोडोलॉजी थी वही हम बहुत रिसर्च बेस्ड हम इनके लिए मटेरियल तैयार करते थे, फिर वही लेके हम उसको प्रेजेंट करते थे। और फिर पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते थे कि मौका दे दे, वो क्वेश्चंस करे, वो
रूम्स में जाए, डिस्कशन रूम्स में जाए, ब्रेकआउट रूम्स में जाए, वहाँ आपस में डिस्कस करे और फिर हमसे अपनी लर्निंग शेयर करे और क्वेश्चंस करे। तो इस तरह से एक हमने इंटरेक्टिव रखने की कोशिश की है। मज़ीद जो हम अगला इंशाल्लाह कोहोर्ट लेंगे मे बी इन सितंबर, उसमें फिर जो इस कोर्स में कमी पेशी रही है हम उसमें पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से ये हमारा जो कोर्स था तकरीबन 14 सेशंस, बहुत अहम, बहुत की सेशंस, इसके तमाम मटेरियल्स हमने वेबसाइट पे अपलोड कर दिए, तमाम प्रेजेंटेशंस, और इसमें जो लिंक्स हमने जहाँ से हमने रिसोर्सेज लिए हैं वो सब हमने वेबसाइट पे डाल दिया है। अलबत्ता जो प्रेजेंटेशंस थे, जो टीचिंग थी, उसकी रिकॉर्डिंग हम शेयर नहीं करेंगे क्योंकि हमने मज़ीद कोर्सेज चलाने हैं, लेकिन जो मटेरियल हमने इस्तेमाल किया है वो सारा हमने पाकिस्तान अलायंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड के वेबसाइट पे अपलोड किया है। आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा, हमने आपको कहा कि आप हमारे एम्बेसडर्स हैं, आपने जो कुछ आपने सीखा है पेरेंटिंग से रिलेटेड, चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड, माइलस्टोन से रिलेटेड, एजेस एंड स्टेजेस, और फिर जो उसमें बहुत हमने प्रैक्टिकल टिप्स भी देने की कोशिश की है कि बच्चों की लर्निंग को इफ़ेक्टिव करने के लिए या इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए आप क्या स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर सकते हैं। मटेरियल के हवाले से मैम समीना ने लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल कैसे बनाते हैं, बच्चों को कैसे इंकरेज करते हैं, बहुत उन्होंने मुफीद सेशंस कंडक्ट किए हैं। तो उम्मीद है कि आपको वो तमाम चीज़ें याद होंगी, और न सिर्फ याद होंगी बल्कि आप बच्चों के साथ, वेदर यू हैव योर ओन चिल्ड्रन, नहीं है तो आप जहां आप काम कर रहे हैं एज अ टीचर, एज अ केयर गिवर, एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर, आपने ये नॉलेज इस्तेमाल करना है। और जितना आप इसको इस्तेमाल करेंगे, जितना आप इसको आगे फैलाएंगे, पाकिस्तान अलायंस का मैंडेट मेरे ख्याल में उसमें मुकम्मल होता है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आप लोगों ने इतनी कीमती बातें की। और आयशा ने बार बार कहा कि वी डिड अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट। आयशा वो स्मॉल एक्सपेरिमेंट नहीं है, आप लोगों ने जितना इंटरेस्ट से सिंगल नेशनल करिकुलम को स्टडी किया है। आयशा के साथ एक यूके के हमारे रिसोर्स पर्सन थे रॉब, और हमारी एक नीदरलैंड की रिसोर्स पर्सन थी, मैं उनका नाम भूल गई। उन्होंने पूरा हमारा करिकुलम का स्टडी किया और उन्होंने मुझे इतना मेरे साथ इतना अच्छा रिफ्लेक्शन शेयर किया। मैंने उनको कहा कि आप मुझे ये लिख के भी दे दे, और मैंने उनको साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट किया कि इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट के लिए गुंजाइश है वो भी आप लिख दे। तो इस तरह से जो छोटे छोटे एफर्ट्स है, यही मिलके इंशाल्लाह एक बड़ा हमारा सफ़र बनेगा। तो ये छोटे छोटे एफर्ट्स मुल्क के जिस हिस्से में भी हो रहे हैं, इनको हमें कनेक्ट करना है, और पाकिस्तान अलायंस का मकसद भी ये है कि इस तरह के एफर्ट्स के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, इसमें सिनर्जी क्रिएट करे, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को हम कनेक्ट करें। और मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ, हर सूबे में, हर रीजन में, इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री देयर इज अ वंडरफुल रिसोर्स पर्सन फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। और उस रिसोर्स पर्सन, उस जरूरी नहीं है कि वो रिसोर्स पर्सन किसी यूनिवर्सिटी से फारुग तहसील हो, एक मदर भी हमारी रिसोर्स पर्सन हो सकती है, एक फादर हमारा रिसोर्स पर्सन हो सकता है, एक ग्रैंड पेरेंट हमारे रिसोर्स पर्सन हो सकते हैं। जो हमारा यूथ है, इतना उनमें पैशन है, थोड़ा उनको इंगेज करे तो दे कैन डू वंडर्स फॉर अस। तो इंशाल्लाह हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। आप लोगों को टाइम एंड अगेन हम जहमत देते रहेंगे क्योंकि हमारा काम यही है। आप लोग हमारे साथ शामिल होंगे, फिर हमारा काम चल सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू यू रोज। थैंक यू। थैंक यू सो मच खतीजा, बड़े मज़े की बात है, हम आपको तंग करते रहेंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे। ये इसी का नरेटिव इस गुलदस्ते के बगैर नहीं हो सकता। सर रफ़ीक यहाँ पे है तो मैं इनकी बड़ी ममनून हूँ। सर ने ये समझा कि हम इस कॉज में शामिल हो सकते हैं, और एक बड़ी एजाज़ की बात है कि सर से सीखने का मौका मिला। और जो अर्ली चाइल्डहुड का सर का नॉलेज है, जब सर बोलना शुरू करते हैं तो इंसान कहता है बाकी सारी बातें छोड़ के हम सर को ही सुनेंगे। तो पूरी
जिंदगी का वो अहाता कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे दुनिया के वो मुल्कों में गए और जो वो शेयरिंग करते हैं, मुझे आज भी याद है जब हम पहली मीटिंग कर रहे थे तो सर ने बताया कि किस तरह जो गोरे हैं वो छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, और उनका विजन ये है कि उस तरह से हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को लेके आए। तो कुछ काविश किए, और इंशाल्लाह आप लोग जब वो किताबें देखेंगे, वो करिकुलम देखेंगे, और जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब हो रही है तो आपको फर्क नजर आएगा। और जैसे खतीजा ने और इससे पहले इतने खूबसूरत पैनलिस्ट ने बात की उन तमाम एरियाज की, कि ये जो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है जिसके दरमियान में बच्चा है, चाहे वो उस्ताद है, चाहे वो वालदैन है, या वो एनवायरनमेंट है, इन तीनों के ऊपर काम करना है। और हम प्रोएक्टिवली बहुत रोबस्ट तरीके से इस पे काम कर रहे हैं। पैफिक की वेबिनार सीरीज चलती हैं जहाँ पे एक्सपर्ट्स आते हैं। हमारा न्यूज़ लेटर है जिसके अंदर आप लिख सकते हैं, आपकी रिसर्च है, आप कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं, आप कोई और अपनी जो आपकी एक्सपेरिमेंट्स है स्कूल्स में, तो वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो सारी आवाज़ें, वो सारी काविशें, वो सारा खूबसूरत काम पाकिस्तान के तूल अर्ज में हम उसको फैलाएं, और जितने खूबसूरत लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो इस नैरेटिव को हम आगे लेके जाएं। वो जो एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की, मुझे ये लगता है कि जब इंसान की सोच बदलती है तो उसके इर्द गिर्द का माहौल, उसका एनवायरनमेंट बदल जाता है। तो ये एक छोटी सी काविश थी इस कोर्स के ज़रिए कि उस सोच को बदला जाए, वो उस्तादों में जो हलावत आनी चाहिए, जो उनका काम है उसकी समझ जो उनमें डालनी है, या वो एक एहसास जिम्मेदारी जो डालना है, तो उसमें हम कुछ कामयाब हो पाए। और इंशाल्लाह वो कहते हैं ना कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो वो सारे यहाँ पे सारे शम्मा बेरर्स ही हैं, फ्लैग बेरर्स ही हैं, जो अपने अपने हिस्से में इतना खूबसूरत काम करें कि अपनी जिंदगियों की अल्लाह जाने कितनी दहाइयाँ और उससे भी ज्यादा उन्होंने स्लीपलेस नाइट जो है वो हमें दी हुई है। इसके साथ मैं चाहूंगी कि ये जो कोर्स था ये मेरे लिए भी बड़ा लर्निंग कर्व था। मैं समझ रही थी कि हाँ एक इसी कोर्स हम करने जा रहे हैं, लेकिन द अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स दैट केम बैक, जो रेजिलियंस हमारे स्टूडेंट्स की थी, या जो सीखने का जज्बा मुझे नजर आया, वो अपने आप में एक इतना खूबसूरत चीज मुझे लगी। आप देखें, आपके पास एक डाइवर्स ऑडियंस है जिसमें आपके पास रिसर्चर्स हैं, जिसमें आपके पास एस्पायरेंट्स हैं, जिसमें आपके पास प्रैक्टिशनर्स हैं, जिसमें आपके पास पेरेंट्स हैं। तो वो हर तरह के जब लोग आपके पास आते हैं तो आपको ये पता चलता है कि एज ए नेशन वी वांट टू वर्क ऑन दिस नैरेटिव। एज ए नेशन हमारे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि जो अर्ली ईयर्स हैं वो कितने ज़्यादा क्रूशल और इम्पोर्टेंट है। वो जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की हमने बात की इस पूरे कोर्स में, जो पेरेंटिंग पे बहुत बात की, जो अपने रोल को समझने की बात की, तो वो कहीं ना कहीं अब वो एक डायलॉग तो एक्टिवली स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ मैं चाहूंगी कि जो हमारे कोर्स के पास पार्टिसिपेंट्स थे उनका भी हम रिफ्लेक्शन लें। Idris unfortunately had an emergency, he won't be able to join us, लेकिन हम उनका रिफ्लेक्शन लेके शेयर भी करेंगे, उन्होंने किया भी है। साथ हमारे हैं सबीहा अरशाद। आर यू देयर सबीहा? तो वी वुड लाइक टू लिसन टू यू, आपकी ये जर्नी हमारे साथ कैसी रही। सबीहा, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड गो अहेड। Vish, can you check in audiences, is Sabiha there? She is, yes, Sabiha is there because I just read a comment from her in the chat box. She is there. जी जी, वो बाज़ औक़ात होता है कि हम बोलना शुरू कर देते हैं और माइक म्यूट रह जाता है। आप अगले को ले लें। जी जी, उरूज, I'll आप move. जी जी, सबीहा जब तक आप यू गेट ऑनलाइन एंड यू नो आप अपना माइक सेट करती हैं, I'll go to फहद फरहान। फहद, are you there with us? ये हमारे बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट थ्रू आउट रहे हैं, सब क्लासेस में इनकी अटेंडेंस माशाल्लाह 100%, और बहुत हमारी अच्छी जर्नी रही, इनका इंटरेक्शन बहुत पॉजिटिव था। फहद, आर यू देयर? मेरा ख्याल है मैं एक बैक चैनल पे मैसेज भी उनको करती हूँ। इनको ना उरूज, अभी सबीहा का मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, वो कह रही है मेरे पास माइक का ऑप्शन नहीं है। ये जी, Nevish, kindly can you help with the technical side? Please check it out. They can't see the mic. अस्सलाम वालेकुम।
जी मैं भी देख लीजिएगा, फहद भी ऑनलाइन है लेकिन माइक उनके पास शो नहीं हो रहा, तो आप उनको अलाउ करिए। जी सबिहा, वालेकुम जी सलाम, सबिहा, go ahead. Welcome dear. Thank you, Ms. Aruj. Thank you so much. Assalamu alaikum and happy Independence Day to all. I'm आपको Sabiha Arshad from Fatima Jinnah Women University and presenting the reflection over course. Before going to reflection, I would like to say thank you to Perfect Team for providing me the opportunity for making reflection over course. It's really honored for me. The title of course was Early Childhood Development, the Promise of Endless Opportunities. In fact, this was not only the journey of 15 days, but also this was the journey of childhood to adulthood. Along that, it was reflection, what parents, teachers, and ourselves had done, and now what we as teachers and parents should do. Miss Khatija, I must want to say she is visionary lady and perfect team provide us platform to learn about the early childhood care and development. The design of the course was very dynamic and productive for the community. It did not only highlight the problems but also enable the participants to think and make solutions of problems and further apply in the community. The course touched the almost all areas of child holistic development, such as physical, emotional, social, and moral development, along inclusion of national single curriculum, learning and assessment, use of resources, games, parenting, and child rights. The all prestigious resource persons, Ms. Khatija, Ms. Aruj, Ms. Samina, and Dr. Mithani, they delivered the material in a very simple and creative and applicable way and highlighted the maximum problems and issues that are facing by the children, parents, teachers, and caregivers in the community. They use real life examples, and in order to the mode of instruction, they applied multilingual approach by speaking English, Urdu, and Punjabi very beautifully. They were really very dedicated resource persons. Last but not least, I want to express my deep gratitude to Ms. Khatija Khan and Perfect team for organizing this beneficial course. In fact, this course enlightened the way to approach the underprivileged children, parents, and teachers. This course sensitized us to hold the hands of these children with empathy, love, and compassion, particularly in the early stage of their life. The course opened the windows and gave us the purpose of supporting them when they are facing issues and problems regarding early childhood care and development. At the end, I want to share the poetry of Allama Iqbal, and I thought the efforts of Perfect team on this course showed their struggle and mission by this poetry. जवानों को मेरी आहे सह दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे. Thank you. ब्यूटीफुल। वाह जी वाह, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। ये जो मेरा नूरे बसीरत आम कर दे, यही तो करना है। इसी का नैरेटिव भी हमने हर लेवल पे लेके जाना है। और आप सब माशाल्लाह ये जो 100 के करीब पार्टिसिपेंट्स थे और आज 70 से प्लस ग्रेजुएट हो रहे हैं, ये जो सर्टिफिकेट सेरेमनी हम करें, आप सब ने तो एम्बेसडर्स बनना है। तो विद दिस आई गो टू फहद. फहद फरहान, आर यू देयर? वी वुड लव टू लिसन टू यू एज वेल. महविश, फहद को माइक इशू जी आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम, जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। एवरीवन। फहद, गो अहेड। बहुत खुशी की बात है कि हमने इस कोर्स में हिस्सा लिया और आप लोगों ने हमको मौका दिया। और बेसिकली हमारा जो ताल्लुक है वो ऐसे इलाके से है जहाँ एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। और मैंने बस एक बात कही आप लोगों से और आप लोगों ने एकदम हमारा जो है ना एडमिशन कराया अपने आप के। तो पहले मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जैसे लीडर्स हैं हमारे मुल्क में और इस एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ।
بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ لوگوں کی وجہ سے اور آپ کی کورس کی وجہ سے بہت چینجز آئے ہیں. میں ایسے جو ہے نا ریفلیکشن نہیں دیتا ہوں کہ بک کتابوں کی طرف سے, میں اپنا خود ریفلیکشن کیوں نا بتاتا ہوں. میں جو کلاس لینا چاہتا ہوں, اس سے پہلے میرا خود ایک مسئلہ تھا. میرا ایک بھائی تھا, ان کا ایک مسئلہ تھا, تو میں نے میم سمینہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ بہتر ہو جائے گا, اس کے لیے یہ کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے. تو جب میں نے دوسرا جو ہے کلاس اٹینڈ کیا, سمینہ سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے یہ جو ہم کو جو ہے نا تھاٹس دی اور بھائی, تو اس کی وجہ سے میرا بھائی جو ہے نا وہ الحمدللہ اسکلام میں سیکنڈ پوزیشن لے کے آئے اس وجہ سے. تو میں بہت شکر گزار ہوں میم سمینہ, انہوں نے بہت اچھی ریفلیکشن دیا. عروج کا میں تو شکر ہوں, خدیجہ کا, اور میں نے کورس میں بہت کچھ سیکھا ہے. ملٹیپل انٹیلیجنس جو ہے نا یہ ایک ٹاپک تھا, یہ بہت امپورٹنٹ تھا. میرے کزنس تھی, وہ بہت شرارتی ہے, کچھ جو ہے نا بہت ذہین ہے, کچھ یہ وہ کر رہے. میں ان کی جو ہے نا نفسیات میں نہیں سمجھ رہا کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا. وہ جو میں اب سمجھ رہا ہوں اس کورس کے حوالے سے, تو وہ کزن مجھ سے بہت خوش ہوتا ہے. تو میں ان کے انداز جو ہے نا ملٹیپل انٹیلیجنس کے جو ٹاپک تھے میں نے ان کو سمجھایا. تو اس کی وجہ سے وہ بچے نا ہم کو ہم سے جو ملتے ہیں بہت پیار سے ملتے. تو بہت خوشی کی بات. اور کچھ کا بلوم ٹیکسانومی جو ہے نا ٹاپک بہت گریٹ امیزنگ تھا, میں سمجھا. ECE بیسیکلی جو ہے نا وہ فزیکل ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں ہوتا ہے. ہم نے کورس میں یہ سمجھایا. پھر نیٹو ڈیولپمنٹ پہ ہم نے بہت کچھ لرن کیا میم سے, عروج سے. پھر لینگویج ڈیولپمنٹ پہ بہت کچھ سیکھا. اور اس جو ہے نا تو یہ جو چائلڈ کورس ہم نے لیے, اس سے میرا جو بیسٹ لگا وہ کیئر گیور ہے. نگہدار جو ہے نا ان کی ذمہ داریاں تو ہوتی ہے, تو وہ ان کی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہے. ان سے جو ہے نا بچے آگے جو ہے نا چلے جاتے ہیں. تو کیئر گیور کی جو خصوصیات ہے نا, وہ محنتی ہونا چاہیے, دوستانہ رویہ ہونا چاہیے, بچوں کے ساتھ تعریف کرنے والا ہونا چاہیے, ہمدرد ہو, پر اعتماد ہو, اچھا سما ہونے والے چاہیے. تو میرے پاس جو بہت زیادہ اپنے ذہن میں بہت ریفلیکشن جو ہے نا میں کہوں کہ ڈسکس کرو, لیکن ٹائم کی بہت زیادہ کمی ہے. آپ لوگ بہت بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں بولنے کا موقع دیتا ہوں. آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا, تو میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. آئی ایم ڈن. فہد. تھینک یو فہد, دیٹ واز سو بیوٹیفل. مجھے لگتا ہے جیسے ابھی آپ نوجوان ہیں, تو اگر پاکستان کے سارے نوجوان اس طرح سے جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیں گے اور سمجھیں گے, اور جیسے ابھی آپ نے یہ کہا کہ آپ کو اپنے ہی ریلیشن شپ میں پتہ چل گیا کہ کس طرح سے جو ملٹیپل انٹیلیجنس کی تھیوری ہے کہ کس طرح ایموشنس کو اور دوسروں کو سمجھنا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ جو ECE کا نیریٹو ہے یہ ہمیں ایک بہتر انسان بناتا ہے, اور وہ ہم نے اپنے لیے بننا ہے. ہم خود ایک مکمل اور اچھے اور پرامن انسان ہوں گے, خوبصورت انسان ہوں گے, تو ہم دوسروں کے لیے بھی وہ چیزیں لا سکتے ہیں. تو ہم بہت خوشی ہے ہماری جتنے پارٹیسپینٹس تھے, دل تو کرتا ہے کہ سب سے ریفلیکشن سنیں, سب کی طرف جائیں, لیکن وقت کی قلت بھی ہے. تو اور آپ لوگوں کے اتنے بیوٹیفل ریفلیکشنز ملے بھی ہیں, تو یہ تو اب ایک فیملی بن گئی. ہم ملتے رہیں گے, ایسے ایونٹس ہوتے رہیں گے انشاءاللہ, اور کورسز بھی آتے رہیں گے. تو اس کے ساتھ میں چاہوں گی کہ جو ہماری سرٹیفکیٹ سیرمنی ہے, جو آپ لوگوں کی اتنی کاوشیں ہیں, جو اتنا آپ نے وقت نکالا, ہم نے بھی آپ کو خوب بھگایا اور آپ بھی خود بھاگے, تو اس کی ہم اناؤنسمنٹ ضرور کریں. تو مہوش اگر آپ سرٹیفکیٹ شیئر کر دیں تو آئی کیپ اناؤنسنگ دا نیمز. ماشاءاللہ یہ جو سارے جیمز ہیں جنہوں نے ہمیں اس میں جوائن کیا, اور میں تو کہوں گی کہ جو خصوصی سب جو ہمارا جو تھینکس ہے وہ مہوش کے لیے کہ پورے کورس میں ہمیں ٹیکنیکلی انہوں نے اسسٹ کیا, اور ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے ماشاءاللہ یہ نظر نہیں آتے لیکن بہت زیادہ ہیلپ. مہوش کے بغیر تو خیر یہ ممکن ہی نہیں تھا. جی تو سوری, She has been phenomenal. تھینک یو سو مچ مہوش. اوکے جی,
So the certificate of participation for the completion of the course goes to Maria Saifullah. I'll just keep saying the names in order. Maria, congratulations. Abdul Rahman, Afshan Jamali, बहुत active participants थे. Ayman Jamshed, Amber Sultana. I hope all are here, otherwise we'll get these digital copies as well. Amir Hussain, Andaleep, Anita Bulbul, Anmol Iqbal, Arooj Jahangir, Beenish Fatma, Iram Kashkheli, sorry, Isha Mirza, Fahad Farhan, फहद को भी आपने सुना भी माशाल्लाह. फरखंदा जबीन, गजाला अफसर, हाजरा बीबी, हिमा रानी, हिना राशिद, हूर जावेद, Idris Jahan. Idris had emergency some, so he was not able to join us today. But inshallah, we'll send those certificates, and I hope everything remains fine there. Madiha Abbasi, Mahnoor, Maham. I am so happy to announce all these names, knowing that these people were part of this beautiful journey. Malaika Asif, Arif, Malaika Babar, Maliha Ahmed, Ahmad, Maria Mukhtar, Maria Saifullah, Mariam Bibi, Nishat Anjum, Alvisha Feroz Khan, Rizwana Sami, Sabiha Irshad Mughal, Arshad, Sabiha Arshad Mughal, सादिया मुनीर. इतने फ्लिप हो रहे हैं तो वो जैसे जैसे रोल करते हैं मुझे चक्कर आना. सफिया जमान, I'm sorry if a name goes here and there. Saleha Shaukat, Salma Nazar Khan, Salma Shaheen, Sana Mehmood, Sana Tabassum, Sania Darif, Sania Ghulam Fatima, Ilyas Ghulam Fatima, Shabana Zarmas Khan, Shabnam Firdaus, Shazia Rafi, Shehla Bibi, Shoaib Ahmed, Shumaila Shabir, Sidra Riaz, Sobia Yusuf, Sumbul Bibi, Sumaira Noreen, Sayyida Raheen Gul, Sayyida
Zunaira Banuri, Ummi Atiya Kulsum, Wajiha Naz, Zarmina Sultan, Zartasha Waris, Zohra, Ji Zohra, and that's about it. I wish all the names are done. Yes. So congratulations to all the participants who received this certificate. Now we are reaching towards the end of the ceremony, and the lady who has been sitting very quietly, one of the facilitators of the course, I know she has a lot to talk about it, and we were all so enthusiastic about this course. So with much ado, Ma'am Samina, a phenomenal person, she's been affiliated with the curriculum और इस पूरी journey को जितने अच्छे तरीके से वो जानती हैं, मेरा ख्याल है कम ही. So over to you, Ma'am Samina, for your last thoughts and vote of thanks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Thank you, Aruj. इसमें हमारे panelists हैं, I want to thank you them for all the valuable input and their experiences and valid information. और इसमें almost सारे जो aspects हैं वो address हो चुके हैं. If I would be saying those things तो एक तरह से repeat करना होगा. लेकिन जो एक अच्छी चीज है जो कि it's very encouraging, there are so many people adding to this drive, which is very important, very much needed. ये सबसे positive चीज है. इसमें बस एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि we need to give role models to our children. उनके पास role models नहीं है. जैसे उम्मे कुलसुम साहिबा ने फरमाया, a child learns what he lives with. So बच्चा वो सीखता है जो देखता है, वो नहीं करता जो से कहा जाता है कि आपको ये करना है, ये करना है. तो इसका मतलब ये है कि हमें as a nation अपना attitude change करने की जरूरत है if we want to have early childhood development in real sense. वो सिर्फ पेरेंट्स, टीचर्स या फैमिली मेंबर्स तक महदूद नहीं है. जैसे खतीजा ने कहा, every single person of the society need to be part of it. तो ये ड्राइव हमने सिर्फ इंस्टीट्यूशंस तक नहीं बल्कि let it be shopping malls हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, जिसे हम डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव बना रहे हैं. इसी तरह से जहाँ जहाँ बच्चे का इंटरेक्शन पॉसिबल है, हमने हर एक उस एरिया को देखना है और हर शख्स को इस अवेयरनेस देनी इस ड्राइव में शामिल होना है. बिकॉज पर्सनली आई हैव सीन children suffering in the hands of their own parents. तो अगर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चों की डिस्ट्रक्शन के लिए तो तीसरे बंदे का तो you can imagine. तो इसलिए it's very important कि whoever is interacting with the child या जहाँ जहाँ बच्चे की presence है stage group के लिए, and this development starts before birth. So it's not that कि आप तो जो 1000 days की हम बात कर रहे हैं तो ये भी हर एक को बताना, हर एक को awareness देना बहुत ज़रूरी है. So आज I mean मुझे तो इसका वेबिनार का जो the topic है कि developing strong foundations for a stronger country says it all. और ये की जो है वो early childhood development है. अगर हमने इसको सही कर लिया तो हमारे मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता. मतलब बहुत इसमें काम करने की जरूरत है. ये इतना आसान टास्क नहीं है, इट्स चैलेंजिंग, लेकिन ये कि इसको करना जरूरी है. So आज आज़ादी का दिन भी है, 14th अगस्त भी है, और इतना हमारी सक्सेसफुल जो ऑनलाइन ट्रेनिंग थी ऑर्गेनाइज्ड बाय Pakistan Alliance headed by Khadija, उसकी closing ceremony थी माशाल्लाह से. And I was looking at the comments कि there were people who were asking for more training. इसी पे इंशाल्लाह I'm sure कि इसको खदीजा कंटिन्यू करेंगी ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको स्प्रेड कर सके. So इससे इम्पोर्टेंट ओकेजन पर दिन पर एक हम प्रॉमिस करते हैं, अहद करते हैं कि हम अपनी इंडिविजुअल या कलेक्टिव कैपेसिटी में whatever we can do to facilitate early childhood development, like starting from 0 till 8 years, वो हम करेंगे. और
उसको समझ कर करेंगे. ऐसा नहीं है कि just for the sake of it, but understanding the philosophy behind it. और उसमें let it be whoever you know we encounter or come in contact, उसके साथ definitely share करेंगे. जिस level पे भी information दे सकते हैं देंगे. चाहे एक vendor बच्चे से बात कर रहा है उसको भी educate करेंगे कि बच्चे से किस तरह से बात करनी है. You know, छोटी-छोटी चीजें बहुत important है, but उसका impact बहुत strong होता है. So wish you all the best and Pakistan Zindabad. Thank you so much, ma'am Samina. Beautiful, beautiful, beautiful insights. Before I go towards the closing, Sir Rafiq, आपसे हम request करेंगे, but क्योंकि जश्न आज़ादी भी है और हम सारे यहाँ पे mentors हैं, तो quickly one liner जो आप कोई भी पैगाम देना चाहें, तो मैं start करूँगी जो हमारा वर्दी panel है, and then I'll reach to Sir Rafiq कि वो proper closing जो है वो करें. So over to you, ma'am Kulsoom, then ma'am Salma, Aisha, Sir Shehzad, Khatija, and then we'll go to Sir Rafiq, ma'am Samina. Any last line that you want to go before I go to ma'am Kulsoom? A message? You're asking me, Arup? जी, ma'am, आपके बाद I'll go to ma'am Kulsoom. जैसे मैंने कहा कि it's a drive, let's be part of it, और जहाँ हम अपनी input दे सकते हैं, because we understand the significance of early childhood development. Let's spread that everywhere, or let's, you know, protect our children by giving this, you know, awareness to all the people around the child. Or if we really want our country to develop, so that is the answer. Absolutely. We all need to spread this message across. What a beautiful message, ma'am Samina. Thank you. Ma'am Kulsoom, one-liner message from you. जी, सबसे पहले तो जी जश्न आज़ादी मुबारक. खुदा हमारे मुल्क को सलामत रखे. आज इतने सालों के बाद माशाल्लाह जो तब्दीलियां हम देख रहे हैं और हर दौर में कुछ ना कुछ हम देखते आए हैं, लेकिन ये एक पहला जो स्टेप नजर आ रहा है कि कम से कम हमें अपने कौम की जो नेशन बिल्डिंग में वी आर लुकिंग टूवर्ड्स द चिल्ड्रन ऑफ द नेशन. ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि ये बहुत ज़रूरी है. एक बच्चा जिसकी जिम्मेदारी एक स्कूल लेता है, हम सबको स्कूल के साथ मिलकर जिम्मेदारी लेना चाहिए. लेट अस ऑल contribute our efforts, engage ourselves towards building the nation, towards building the institutions, and helping the government and the institutions to go into a very successful streamline of child development. These children are our youth of tomorrow. We cannot forget this thing, and we should not. First, build their personalities, build their the pathways for education and trainings, and institutionalize these things into a very positive way. हम अकेले कुछ नहीं कर सकते. अगर मैं ये कहूँ कि मैं पाकिस्तान टीचर फोरम की प्रेसिडेंट हूँ ICT की, तो मैं I cannot मतलब एक मेरा सिंगल जो वो है एक्टिविटी है, वो कोई चेंज नहीं ला सकता. We are together, then we can bring a change. Absolutely. What a wonderful message, ma'am. Thank you so much. वो जो कायदे आज़म का पैगाम था ना, unity, faith and discipline, वो unity लानी है कि मिल के united हमें एक unified level पे वो ripple effect create करना है. How beautiful. With this, I'll go to Ma'am Salma. Your one-liner, your message on Independence Day. You're my ma'am, so don't call me ma'am. Just call me Salma. Salma, darling. So much from you, because from Dr. Samina, I learned in 2007, and I still remember her so vividly. You know, and it was such an honor to get another chance to learn from her again from this course. And Miss Uruj is like, you know, even my father-in-law would be asking, like, the course is finished, and do you have the recordings of Uruj? Like, how are you listening to her? Right? Oh my God. That's the most beautiful compliment on Independence Day that I got. I would love to meet Uncle. As I said, because when I got married, my husband, my in-laws, they will sit and listen to all these sessions. Not all, but most of these sessions with me, they have heard. And, you know, I'm amazed that we are aspirant parents, but we get to talk more about these things. But coming to the message, it's a very small message, which I am also going to do. I would think that each one of us should write something today, you know, something that we will do today or in the coming year. It can be small or big, you know,
about ECC, how we can raise this awareness, how we can spread this. And then after a year, maybe we shall, or maybe after a day or after a month, we shall write it on Traffic website. But we have done differently, right? And I love this idea, planting a tree, right? Or maybe just going out and spending some time with the kids. So. Absolutely, Salma. How beautiful. Small things, you know, they make huge contributions. I read somewhere, what is the notion? Not a multitude of drops. So each drop matters, and that's what we are going to do. Inshallah, when our new courses are coming up, and when you next year, when you visit the Perfect website, you'll see there is an onslaught of all those messages, and people, they're really doing that. So with this, I go to Aisha, your message, and then we'll move ahead. What would you like to, you know, what's your one liner that you want to give? Message to me, I think it's more a reminder to the self, and hopefully it will resonate with some others as well. A moment जब कोई काम कर रहे होते हैं और कोई काम जो इस जैसा काम हो जो बड़ा मुश्किल भी लग रहा हो, और के एसएनसी के जब हम ये कर रहे थे लिटिल बिट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन विद इट, तो हाँ जी है तो बहुत अच्छा, लेकिन ये होगा कैसे, यू नो, ये नहीं हो सकता, ये बड़े साल लगेंगे एंड सो फॉर्थ. So I think without losing sight of the goal post, the longer term goal post, लेकिन आज हम क्या कर सकते हैं? And that's all that matters. You know, all you have is right now, today. What can I do today, whether it's with my own child, whether it's a niece or a nephew, whether if it's in the capacity of a teacher in my classroom, if it's a caregiver, grandparent, etc., etc. तो हमारे साथ जो भी बच्चा है जो अपने fundamental years में है, under the age of 6 or 7, हम आज उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या आज हम उसको differently देख सकते हैं कि नहीं? Can we spend a bit more time? क्या हम वो power dynamic relationship से निकाल सकते हैं? Without looking down at them, we look at them as equals, and we look at them with, you know, a whole world of possibility within them. So I feel that's a reminder, and every day matters. Like you just said, every drop matters, every rock matters. You know, it's the little steps, it's the small steps. How do you eat an elephant? One bite at a time. So I think we should all start biting on the elephant. It's a very huge elephant that we are all trying to bite. But you know, when more people are going to be there, it will be, you know, gone in no time. So what a beautiful reminder, Aisha. I think you. Thank you, and what an honor to be, you know, with such incredible people, and really, really inspired and honored, and all the very best. Thank you so much, Aisha. What a beautiful reminder and message that we all need to start that journey from our own self. Dr. Shahzad is here, and I know he has a wonderful message to, you know, parting message to give. Always words of wisdom. So over to you, Shahzad. I am a bit overwhelmed, thoda sa, or I think we are, like I said, it's a community of practice. We learn from each other, we inspire each other, or I think that inspiration needs to continue. Or I think Pakistan Alliance is a great platform. So informal exchanges, formal exchanges is zaruri hai. It helps us to keep ourselves motivated, and especially what matters the most. And hopefully, whatever change we can make, however we can give, we should start giving, and in a purposeful way, in a relevant way, or koshish karen ke, which I'm learning as I'm going forward, ke simple rakhna zaruri hai, engage karna zaruri hai. ये जो theories हम पढ़ते हैं या curriculum सिग्नेचर, हमारी tendency होती to piling high and deep. ये जब मैंने अपना PhD मुकम्मल किया था तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि you just have a PhD piling high and deep, but when are you going to take it out in simple ways that is easy to understand? You know? So that's the challenge. Or how, just Aisha ne kaha na, how is such a fundamental issue in Pakistan? We have plans, we have sector plans and financial plans, and we have tons and tons of stuff. But it breaks the camel's back. We just don't know how to bring it down, how to simplify it. Or as a teacher, I've learned, you keep it simple, it goes a long way.
Absolutely. So thank you so much for the participation, or I'm very, very happy to be part of this. Thank you. The pleasure is all ours, sir, every time listening to you. And I think the way you advocate, child care policy and all the laws and regulations there are, I was there in that session with you. So it is very important that we bring that education and knowledge to everybody. And you very rightly said कि हमें तो खुद ही अपने हिस्से की शम्मा जलानी है, हर एक ने अपना हिस्सा डालना है, और वो जो हाउ है उसी की तलाश में ये कोर्स शुरू हुआ है, और ये चलता रहेगा, और इस तरह के और बहुत सारे कोर्सेज आएंगे. So with this, I'll go to Khadija. I would take your, last gems, and then I'll move to Sir Rafiq to wind up the session. थैंक यू डॉक्टर शहजाद. जितना भी मुझे डांटे, लेकिन मेरा नारा है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस फॉर अ स्ट्रॉन्गर कंट्री. इसको मैंने छोड़ना नहीं है. और लेकिन आज मैंने फेसबुक पे भी लिखा है कि लेट्स स्टार्ट रीडिंग टू यंग चिल्ड्रन for 15 to 20 minutes daily if we want to create a literate nation. आज ये हम अहद करें और आज के ही दिन से शुरू करें कि जो भी यंग बच्चे, चाहे अपना बच्चा है या कोई और है, किसी और के लिए भी आप पढ़े. 15-20 मिनट्स कोई बड़ी बात नहीं होती है. 15-20 मिनट्स निकाल के यू शुड स्टार्ट रीडिंग टू दैट चाइल्ड, जो एक बुनियाद रखेगी एक लिटरेट नेशन की. थैंक यू सो मच. थैंक यू खदीजा. लेकिन आज करना है आप लोगों ने, ये करना है. बिल्कुल, आपने इतना खूबसूरत एक टिप दे दिया, और हमारी ये कोशिश होती है हम सबको काम पे लगाएं. तो आज आपको काम पे लगाना है कि 10 मिनट्स आपने डेडिकेट करने आउट ऑफ योर लाइफ फॉर दिस रीडिंग. Only 15-20 minutes, and that's all I'm asking for. Yeah, definitely. But Thank you so much, Khadija. daily, you have to do it daily, every ये day. persistence and perseverance is the key. उसमें skip नहीं करना, वो एक रूटीन बनाना जरूरी है. तो बेशक आप फोन उठा के पढ़े, वीडियो कॉल पे पढ़े, इन पर्सन पढ़े. ओ हेलो बेबी, हेलो. लेकिन पढ़े जरूर प्लीज. थैंक यू. थैंक यू खदीजा, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल. अब पढ़ेंगे तो फिर पढ़े लिखे लोग भी बनेंगे ना, ये बहुत जरूरी है. तो उसके साथ इससे पहले कि मैं सर रफीक के पास जाऊं, आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग. मेरा ये अपना मानना है कि चैरिटी बिगिंस एट होम. और जैसे अभी आयशा ने भी और लोगों ने भी बात की, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर मेरा दायरा इख्तियार ये है कि कोविड की इंफॉर्मेशन मैं अपनी काम वाली को सिखा दूं, अपने ड्राइवर को सिखा दूं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को सिखा दूं, अपने बच्चों को सिखा दूं, तो मैं उस दायरे से स्टार्ट करूंगी. और फिर अगर मैं अपने कलीग्स के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकती हूँ, तो मैं उस दायरे में जाऊंगी, और वो लोग आगे से अपने दायरे में जाएंगे, तो वो एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है. चाहे वो इसी का नैरेटिव है, चाहे वो कोई अच्छी बात है, तो हमने अपने से वो शम्मा जलानी है. और मेरी जिंदगी का एक मोटो रहा है कि यही एक जनू, यही एक ख्वाब मेरा है, यही एक जनू, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चराग जला दूं जहां अंधेरा है. तो वो जहां हमें किसी भी जगह पे हम रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकें, मैं समझती हूँ कि मेरे पे अल्लाह ताला की खास करम नवाजी है कि इतने खूबसूरत लोग जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, उनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, जो मुझे भी सिखाते हैं, मुझे सीखने का मौका भी देते हैं. एंड आई एम चैलेंजिंग माई सेल्फ. और सबसे बढ़ के तो सर रफीक ताहिर हैं, जिन्होंने ये शम्मा जलाई है, ये पूरी महफिल सजाई है. तो विद मच अडू आई विल गो टू सर. आपसे हम चाहेंगे कि इस महफिल का इख्तिताम आपके साथ हम करें आपकी बात से. तो सर ओवर टू यू सर रफीक ताहिर. थैंक यू सो मच अरूज. मेरे लिए शायद ये एक बहुत अच्छा आज मौका भी है, और परसों एक और मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम दिन आ रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जब इसकी लॉन्चिंग करेंगे, तो उन्होंने मुझे ये एजाज़ दिया है कि सिंगल नेशनल करिकुलम पे जो पहली स्पीच है वो मुझे करनी है. तो शायद ये भी एक ऐसा बड़ा एक मेरी ज़िंदगी में एक अवार्ड होगा जो मैं आज से 40 साल पहले ड्रीम करता था कि मैं भी एक ऐसा सिंगल नेशनल करिकुलम बनाऊं जिसमें हमने अर्ली ग्रेड को भी मैं एड्रेस करूं, और मैं ग्रेड 12 तक पे जितना बनाऊं, और सबकी आपस में एक लिंकेज हो. मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत मुबारकबाद देता हूं. मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने इस कोर्स को अब आधा मैंने भी कर लिया है. तो एक सर्टिफिकेट जिसमें मेरा नाम पूरा नहीं, आधा लिख के मुझे भी दे दें, क्योंकि इतना कुछ कोर्स से आपने जो कुछ उसमें सिखाया है, ये बताया है, और जो रिफ्लेक्शन 2 बच्चों ने दी है, मुझे उससे लगता है कि इस कोर्स को मैंने
तकरीबन हाफ तो मैंने मुकम्मल कर लिया है, तो कुछ थोड़ा सा और आप लोगों से पढ़ के सर्टिफिकेट ले लूँगा जरूर। तो एक तो कॉन्ग्रेचुलेशन खतीजा, और मुझे खुशी ये है कि आज जो सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, इसमें डॉक्टर निफानी हों या समीना हों या आप हों या खतीजा हों या बाकी हमारे, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ जिंदगी में, कुछ का तो बहुत लंबा सफर है, कुछ ने बहुत पहले से, लेकिन कम से कम 10 साल और 20 साल वाले लोग भी इस पैनलिस्ट में मौजूद हैं। समीना ने शायद 2000 से मेरे साथ काम शुरू किया, और खतीजा का भी हमारे बहुत लंबा अरसा गुजर चुका है। डॉक्टर निफानी भी आज से 15 साल पहले से हम एक दूसरे से, लेकिन मुझे खुशी हुई कि हमारे आज के इस पैनलिस्ट में 2 और नए लोग भी ऐड हुए हैं, जिसमें डॉक्टर सलमा, जिनके साथ अभी रिसेंटली कनेक्ट हुआ फेसबुक पे, लेकिन आज मुझे नहीं अंदाजा था कि ये वही हैं जिनसे मेरी बात अभी फेसबुक पे हमने कनेक्ट किया, और आज हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। और दूसरा आयशा आदिल, इतने अच्छे ब्रेन हमारी टीम का हिस्सा बने, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे जहन में, ये जो मेरे दिल में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या अर्ली चाइल्ड एजुकेशन और डेवलपमेंट का एक ख्वाब जो पिछले 20-25 साल से मैं अपने साथ लेके चल रहा हूँ, तो मुझे इस तरह के लोगों के ऐड होने से, और इवन सॉरी मैंने उम्मे कुलसुम का नाम लिया, कुलसुम मेरे साथ पिछले तकरीबन मिनिमम 25 साल से काम कर रही है, बल्कि उससे भी ज्यादा शायद हमने इकट्ठा काम किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई इन 2 नए लोगों के आने से और इनके ख्यालात सुन के। और एक जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा, शायद ये आयशा आदिल का था या सलमा का था, कि हमने जब सलमा का था कि हमने सबसे ज्यादा बात औरत की एम्पावरमेंट की, उसमें से सिर्फ एक चीज को हमने निकाला एम्पावरमेंट में, कि माँ को दरमियान से आउट कर दिया। तो मैं तो इस पे, ये एक ऐसा सेंटेंस है, एक ऐसा छोटा सा थॉट प्रोवोकिंग ये फिक्र है कि जब औरत के अंदर माँ रहेगी तो वो फिर सब कुछ है, फिर ये अर्ली चाइल्डहुड, फिर ये बच्चा एक बेहतरीन इंसान बनना, ये सारा अगर माँ रहेगी तो सब कुछ रहेगा, और माँ से ये सारे सफर का आगाज आगे होगा। तो बहुत अच्छी एडिशन है हमारे साथ इन लोगों की, और जिन्होंने कोर्स किया और उनके जो रिफ्लेक्शन थे सबिया और दूसरा, तो दैट इज द एक्सीलेंट। मैं समझता हूँ कि जो आप लोगों ने कोर्स में एफर्ट की है, उसका रिवार्ड शायद आज 14 अगस्त से बेस्ट डे नहीं हो सकता, तो आपको खतीजा, समीना, मिथानी साहब, आप सबको मिल गया है, और मैं इस पे बहुत दिल से आपको मुबारकबाद देता हूँ। और फिर अगर मेरी अपनी टीम की इतनी अच्छी अचीवमेंट हो तो मुझे इससे ज्यादा खुशी और क्या होगी। और इन 2 लोगों के एडिशन से मुझे उम्मीद है कि हमारे दरमियान और रवाबत बढ़ेंगे। और ये जो जर्नी है, जर्नी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये जर्नी बड़ी लॉन्ग वे जर्नी है, और इसके अंदर बड़ी हमें एक जिसको कहते हैं कमिटमेंट और कंसंट्रेशन के साथ आगे चलना होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत सारी कैंपेन में हिस्ट्री में पढ़ता हूँ और अपनी मिनिस्ट्री के कागजों में भी देखता हूँ कि कभी कच्ची क्लास प्रोग्राम कभी क्या शुरू हुए, लेकिन ये कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचे, हाफ वे में ये खत्म होते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमने ये जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया है, जिसमें पूरे पाकिस्तान के तमाम लोग जो इसके अंदर आके काम करना चाहते हैं, उनके बाद एक बहुत बड़ी फैसिलिटी अवेलेबल है। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेक्रेटेरिएट के सी ब्लॉक में बैठे पहली कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे थे, और मैं एक बंदे को कॉल कर रहा था, मेरे ख्याल में खतीजा सामने बैठी थी, रूपानी साहब भी थे, तो मैं एक बंदे को कर रहा था, और वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के उस वक्त के वाइस चांसलर थे, और उन्हें मैं कह रहा था कि मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज दिस नेशनल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस इन द कंट्री ऑन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। तो मेरे ख्याल में उन्होंने मुझे एक ही जुमला कहा, सर ये सब कुछ आप खुद है, आपका है, आप आए और करें। तो मैं समझता हूँ कि ये सफर बहुत अच्छे अंदाज से शुरू हो चुका है, हमारा काफिला अल्हम्दुलिल्लाह आगे बहुत बढ़ रहा है, और उसमें एक बहुत बड़े अच्छे लोग, अच्छी सोच वाले लोग वो साथ शामिल हो रहे हैं। और ये जो मेंबरशिप मुझे बताई अभी खतीजा ने दोबारा शेयर की, तो ये एक ऐसी चीज है कि अब ये सफर कभी रुकेगा नहीं। अगर इसमें मैं माइनस हो जाता हूँ, खतीजा या अरूज माइनस हो जाती है, तो बेपनाह ऐसे लोग हैं जो अब इस फ्लैग को लेके वो चलेंगे, और इंशाल्लाह अब इस सफर को वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाएंगे।
मैं 3 बातें कंक्लूड करता हूँ जो जिस पे मैं सरकारी सतह पे तो मेरे पास जो इख्तियारात हैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आप इस चीज को अपनी कैंपेन का हिस्सा बनाएं। नंबर 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाना है। इस पे आप हर फोरम पे बात करें जब तक लेजिस्लेशन, और इसके लिए हमारे साथ कुछ दोस्त हैं जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो सारे मेरे पास आए, मैंने उन्हें ब्रीफिंग भी दी, हमने पेपर होमवर्क करके भी उनको दे दिया, हमारी इस असेंबली में डिबेट भी हो चुकी, और ये इतना फेवरेबल एनवायरनमेंट है इमरान खान साहब की हुकूमत का कि अगर अब हमने लेजिस्लेशन कर ली तो फिर आपके हाथ और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, अभी हम एक प्लान कर रही है मिनिस्ट्री एजुकेशन पॉलिसी पे बात करें। जो 2017 की एजुकेशन पॉलिसी थी उस टीम को मैंने लीड किया था पूरे मुल्क में, और उसमें 2nd चैप्टर जो था वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे, और अभी भी मिनिस्ट्री की वेब पे पड़ा है, आप जरूर उसको पढ़ें। और अगर ये इस पे दोबारा काम जैसे शुरू होने वाला है जो मुझे मिनिस्टर ने उस दिन बताया, और हमारा इख्तियार होगा कि हम अर्ली चाइल्डहुड का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 में एक बेहतरीन किस्म की प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड दोबारा से हम दे सकेंगे। 2009 में कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था, अब कम। तो नंबर 2 पॉलिसी रिफॉर्म के अंदर भी अपना रोल प्ले कर सके। और नंबर 3 जो चीज आपके और मेरे सब हमारी पूरी टीम के जिम्मे है, काइंडली हम इसको अब अपनी हर गुफ्तगू का हिस्सा बनाएं, अवेयरनेस क्रिएट करें कि अब जैसे मैंने आपको कहा कि अब देहातों में भी पेरेंट्स को एहसास हो रहा है कि हमारे बच्चे को बहुत जल्दी इस तालीम का हिस्सा बनना चाहिए। जो पहले 6 और 7 साल के इंतजार करते थे, अब वो दूसरी साल। और अभी सिर्फ मैं आपको 2 दिन पहले की बात बताऊं, मेरी बड़ी बेटी है, उसकी 3 बेटियां हैं। अभी एक उसकी बेटी 2.5 साल की है, उसने मुझसे जिद करके एक चेन ऑफ स्कूल के अंदर, मैंने उसके मालिक को फोन किया, मैंने कहा इस बच्ची को दाखिल करें, और मैंने बेटी को क्या, मैंने कहा एक अभी 3 साल की तो हो जाए। उसने कहा नहीं पापा मैं समझती हूँ अब ये बड़ी होगी और इसको इस वक्त इस चीज के अंदर शामिल होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय प्लेइंग या लर्निंग बाय इंटरेक्शन या लर्निंग बाय अदर्स। ये सारे जो कॉन्सेप्ट दुनिया में है वो सारे के सारे अब उसको यहाँ से आने चाहिए, तो अवेयरनेस है। तो तीसरी बात जो मैं आप सब पैनलिस्ट से और बाकी लोग हमारे साथ हैं कि प्लीज जहाँ कहीं बैठे एक इस मौजू और 10 बातें हो रही होंगी, आखिर में खाली एक्सक्यूज मी कह के एक जुमला कह दें कि अर्ली चाइल्डहुड इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है, अर्ली चाइल्डहुड इस मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तकदीर बदल सकती है। बिलीव मी, मैंने इंटरनेशनल फोरम पे प्रेजेंटेशन दी, ये तो जुमला आप सब लोग इससे बेहतर जानने वाले बैठे हैं यहाँ कि इफ यू इन्वेस्ट $1 तो आउटपुट विल बी $100। तो ये अर्ली चाइल्डहुड में $1 की इन्वेस्टमेंट $100 की आउटकम हो सकता है। तो मैं इस पे कंक्लूड करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑल दीज आर द एक्सीलेंट एफर्ट्स, बेहतरीन और बड़े बेहतरीन लोगों की टीम भी बनती चली जा रही है। सफर को जारी रखिए, कमिटमेंट को जारी रखिए, और जहां मैंने ये 3 बातें आपसे गुजारिश की हैं और 4-5 बातें, लेकिन नहीं फोकस, जहां बैठे जहां की मुलाकात हो लेजिस्लेशन पे बात करें। हर सूरत ये बड़ी जहां जब भी अभी मौका आपको मिले, और मैं इंशाल्लाह जिस तरह करिकुलम का मैं बॉस था मुल्क का, तो आप सबको शामिल किया, तो इंशाल्लाह पॉलिसी में भी अगर मेरा रोल जैसे डिटरमिन होता है उधर भी आप सबको शामिल हम करेंगे, और उसके अंदर भी। और तीसरी जो अवेयरनेस पे है, इस कंपेन को तो आप कभी ना भूलें। आप किसी शादी के फंक्शन में गई हैं खवातीन, जहाँ एक दूसरे के कपड़ों की तारीफ कर रही होती हैं और बाकी चीजों की, वहाँ प्लीज आप ये भी कह दें कि सारी चीजें कितनी अच्छी हमारी हैं, लेकिन ये जो छोटे बच्चे हैं इनको कैसे हम इनको परवान चढ़ाएं। तो ये इस तरह से आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लें, एक्टिविटी और गुफ्तगू का हिस्सा बना लें। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बाकी सारी चीजें आपके सामने आती रहेंगी आइंदा भी। और खतीजा आपको बहुत बहुत मुबारक, डॉक्टर नथानी आपको बहुत मुबारक कि आप लोगों ने इस वेबिनार, मैं सच्ची बात है खतीजा ने मुझे दरमियान में इजाजत दे दी, जब देखा कि मेरे घर में बहुत से लोग ताज़ियत के लिए आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप थोड़ी देर आए फिर चले जाएं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, शायद अल्लाह ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी नहीं थी कि जो दोस्त बहुत बाहर से आए थे दूसरे शहरों से, उन्होंने खुद, मैं अभी बैठे ही था तो उन्होंने इजाजत दी कि हम जाना चाहते हैं। तो लेकिन दिस इज माई गुड लक कि मैं फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड आई एम द पार्ट ऑफ दिस वेबिनार।
इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग, लेकिन खतीजा इसको यहाँ नहीं रोकना। अब इसको हमने एक बहुत, अगर आप एटलीस्ट 1 मंथली, लेकिन वो हम आपस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम जनरल बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे वन फोकस पॉइंट ऑफ अर्ली चाइल्ड, एक छोटा सा पहलू लेंगे और टोटली उस पर बात होगी। फॉर एग्जांपल हम एक उनकी जो एक डोमेन है फिजिकल डेवलपमेंट, उस पर बात करेंगे। और एक वेबिनार में हम इस पर बात करेंगे कि चैलेंजेस क्या है और उनका सोल्यूशन क्या है, और इन सारी चीजों को फिर हम एक छोटी सी बुक की शक्ल में करें और 15, 20 या 30 जितने मौजूआत हैं आपस में डिस्कस करके, और ये जो हमारे साथ नए पैनलिस्ट शामिल हुए हैं ये भी माशाल्लाह बड़े बेहतरीन लोग हैं, इनसे भी हम डिस्कस करके तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं और हम कोशिश करेंगे कि मंथली, फिर हम अगर फोर्टनाइटली भी कर सके तो हम करेंगे, और इससे आपके पास एक रिसोर्स मटीरियल डेवलप हो जाएगा हर टॉपिक पे, हमने क्या कहा, लोगों ने हमें क्या कहा, और हम कोशिश करेंगे जो हमारे दुनिया में हमने जो 150 मुल्क 125 मुल्क देखा है, वहाँ जो दोस्त बैठे कभी कभी उनको भी साथ हम शामिल करें। तो इस तरीके से एक अच्छा, और ये एक जो आपकी ट्रैफिक की एक रेगुलर एक्टिविटी हो जाए कि हम रेगुलरली इस तरह से काम करेंगे। फिर जितने यूनिवर्सिटीज के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने हायर एजुकेशन वजारत तालीम में 15 साल डील किए, तो तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर दे आर गुड फ्रेंड, हम उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो प्लीज अब आप इस सफर को आगे कैसे बढ़ाना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और लेकिन जस्ट एक मिनट लूंगी सर, ये ऑलरेडी परफेक्ट का फीचर है, की फीचर, वन ऑफ द की फीचर्स है, और अब तक हमने आपको मैं तमाम डिटेल्स दिखाऊंगी, हमने बहुत सक्सेसफुल वेबिनार्स कंडक्ट किए, सारा डॉक्यूमेंट किया है, न्यूज़लेटर में लिख के वेबसाइट पे सारा हमने डाल दिया है, और बहुत डॉक्यूमेंटेशन बहुत केयरफुली हमने की है, और आगे का भी इंशाल्लाह अभी आपके पास अच्छा खासा इंशाल्लाह हमारे लिए टाइम है, तो हम आपकी मदद से पूरा एक प्लान बनाएंगे और ये एक रेगुलर फीचर रहेगा। और जो आज आप हमारी पैनल की तारीफ कर रहे हैं, ऐसे कई पैनल से इंशाल्लाह आप मिलेंगे एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। और फिर उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि आउट ऑफ द पैनल में 99% लोगों ने ऑलरेडी आपके साथ काम किया हुआ होगा। ये यकीन है मुझे, क्योंकि मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी में गुजर गया। तो मैं एंड पे इसको कंक्लूड करता हूँ और मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो हमारी किताबों की आथर हैं और हमारे करिकुलम की आथर हैं, ये सारी इसमें मौजूद हैं। मैंने ये जिंदगी में, खतीजा आपको याद होगा कि मैंने आखिरी कॉल की कि मैंने कहा मैं सबको घर से बुलाना चाहता हूँ और क्या तुम आए और किताबें लिखी। तो आज तो वो सीक्रेट नहीं रहा, लेकिन वो सीक्रेट था जब मैंने इनको करिकुलम में भी घर से बुला के बना काम शुरू किया और किताबें उनसे लिखवाई। तो मेरा ख्याल ये है कि humbled and honored sir, और इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सबको बहुत मुबारक हो। और ये जो हमारे 76 लोग जिन्होंने आज सर्टिफिकेट लिए, इनके लिए तो बहुत ही मुबारक। They are the excellent advocates for traffic in the country। और इस तरह के आगे कोर्सेज भी जिस तरह भी आज आप लोगों ने अनाउंस किया है कि वो कंटिन्यू रहेंगे, और आप देखेंगे कि ये 76 से 7600 पे वक्त आएगा। तो लेट्स वी कंक्लूड। माशाल्लाह इट्स एक्सीलेंट वेबिनार। डॉक्टर मिठानी जैसे मीठे मीठे लोग भी इसमें बैठे, उन्होंने हमें घेर घार के शामिल कर लिया सारी, तो इनको भी बहुत शुक्रिया इनका भी। और जो हमारे नए लोग हैं उनको भी मैं बहुत वेलकम भी करता हूँ, आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से भी। थैंक यू सो मच। महविश को भी मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उसने भी बड़ा जबरदस्त टेक्निकल, हमें बगैर इंटरप्शन के इतना बड़ा सेमिनार करवाया। तो महविश इज अ की आल्सो फॉर फ्यूचर आल्सो। और कोर्स के दौरान भी सर वो एक तो वो बहुत क्रिएटिव है और फौरन ही कोई सोल्यूशन निकालती थी, नहीं ऐसे करो ऐसे करो। मैं और रोज हम तो जाहिर है पढ़ने लोग, हम टाइम लेते थे, लेकिन वो बेचारी लगी रहती है बैक एंड पे, उसी ने हमें जिंदा रखा है कोविड में। और मेरे ख्याल में ये है कि ट्रैफिक की तरफ से इंशाल्लाह आप महविश के लिए जरूर एक अच्छा सर्टिफिकेट डिजाइन करें जिस पे आप साइन करें और हम भी उस पे सब तीनों चारों साइन करके उसको एक एप्रिसिएशन जरूर एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट इंशाल्लाह।
थैंक यू सो मच। डॉक्टर मिथानी अगर हैं तो उनको भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये बहुत अच्छे तरीके से मॉडरेट किया, और बड़ी खुशी हुई कि वो किसी को उन्होंने डांटा भी नहीं जिस तरह ये टीवी करते हैं, तो हर एक को मौका भी दिया और हर एक की बात भी सुनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत Thank शुक्रिया। you so much, sir. The pleasure and honor is all ours. अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज। आप सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। इसके साथ हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम को पहुंचे। अपना बहुत ख्याल रखें और इंशाल्लाह इसी तरह नए कोर्सेज और नई महफिलों के साथ आपके पास आएंगे। तो अल्लाह हाफिज। टेक अल्लाह केयर। हाफिज। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।